guide us through a brief context setting for today's proceedings and give direction to all of us on the journey forward. Over to Guruji. Project YugParivartan is a divine phenomenon. It is not an imagination of a single person or a group of people. It is the necessary change which is required by the ecosystem. So ecosystem has inbuilt capability to activate the divine process whenever such a need arises. The creator of this entire universe is observing each and every action done by any human being or any other species and making a record, and accordingly it has its own ways and means to give the effect of the causes that we do, give the fruits of the action that we take. So as part of fruit giving exercise, the ecosystem, the creator, the Almighty God keep interjecting the wisdom of governing this cosmos into the minds of the selected people based on their own karma and guide them towards the necessary reforms. Project YugParivartan is that initiative which is activated as per this divine plan. And as part of further extending its scope and taking it to all those people who will be chosen to play their major role as a leader or as a mentor to do the necessary reforms by activating their souls and manifesting that into actions, karma. So Project YugParivartan is also a call, an ahvan for all those souls who have taken birth in this life to play a major role in Project YugParivartan. So during the context setting on a daily basis, we do this call so that people can introspect whether they have also taken birth to participate in Project YugParivartan as a leader or as a mentor. Now, even if you don't think that you are the chosen one, you can still become part of Project YugParivartan and help us and the project team wherever you can contribute. If all of us on this planet contribute, then creating the golden age will not be that difficult. So as a step one, after completing the background processes, we have invited 26 eminent speakers in this 6 days summit to share their thoughts about golden age, their vision of golden age, their plans to contribute, so that these 26 visions will start becoming one vision. Because in order to achieve one world or one country, one family, one workplace, and one philosophy,
it is important that we subscribe to one vision. Now, this one vision can only be created if there is a platform to create a synergy between these visions. So Project YugParivartan Synergy Platform is that platform which the world is waiting for since several years, decades, centuries, and millenniums. To defragment the wisdom, to defragment the gaps, to enlighten the blind spots, and to smoothen the rough edges, we are presenting Project YugParivartan Synergy Platform. And it will be formally launched by two eminent people of India tomorrow, 2 p.m. on the 5th day of the summit. All the speakers that we have invited are doing something good in their public life and are those chosen souls who are here to manifest their Atma into an avatar, their self-realization into self-actualization. Because self-realization becomes meaningless if we do not actualize that into tangible karma. So they will be sharing their vision. As of now, it will be their point of view, individual point of view, and Defined Values Consultants, which is the organizer of the Project YugParivartan Global Summit 2021, may or may not subscribe to that view. So as a disclaimer, please listen to the speakers as their point of view, because it is the process which will take some time when their vision and my vision will become our vision. That's the intent behind this entire exercise of Global Summit. We are not doing this just for doing an event. There is a purpose behind it. There is a context behind it. That we have to defragment all the visions and create a common maximum program. This common maximum program can be subscribed by all individuals, all families, all cities, states, countries, and even the United Nations, so that we all chase the same vision. The vision of utopia, the vision of ideal world, the vision of golden age, the vision where each person on the planet is served with maximum leadership effectiveness. And to do that, there is a need to create 1 million self-actualized leaders in India alone in next 4 years, and 1 crore 10 million self-actualized leaders for the world by 2050. So we need a very high speed of light to perform our work and convert the vision into actual reality of the world, and for which we need your support, your contribution, your understanding of your accountabilities, because it's not just my accountability or Project YugParivartan team accountability. It is the accountability of every citizen of this world to show that vision which can bring peace, prosperity, happiness, and harmony between people. So as we have a lot of audience who understand Hindi and not English, I'm going to repeat
this in Hindi also, so that a proper context is set and everyone feels engaged. Of course, having more languages are more challenges than any benefit. If we have one language throughout the world, then we can optimize our human resource to a great extent. But of course, we have to accept the reality that we don't have one language, we have several languages. So, because this event is starting from India, and in India, it is the Hindi language which is more widespread. So, we have chosen Hindi and English to conduct this event. So, Project Yug Parivartan इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे, इस ग्रह पे, और या अगर थोड़ा और एक्सपेंड करें तो पूरे सोलर सिस्टम पे, पूरी गैलेक्सी में और पूरे ब्रह्मांड में आज वो प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरे विश्व का हर एक नागरिक का भला, उनकी ग्रोथ, प्रोग्रेस सब निहित है। ये किसी एक मनुष्य के द्वारा या कुछ गिने चुने मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। ये एक आध्यात्मिक प्रकरण है जिसका प्रारंभ इस ब्रह्मांड के रचयिता के द्वारा ही संभव है। जो भी इसमें कार्य करेगा वो तो बस एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त बनना है। लेकिन निमित्त बनना इतना आसान भी नहीं है। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना इतने बड़े, इतने महान कार्य को का निमित्त बनना भी आसान नहीं है। हम सबको अपना अपना रोल खोजना होगा, ढूंढना होगा, अपने वाय को तलाशना होगा। क्यों आए हैं इस पृथ्वी पे? क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए हमारा जन्म हुआ है, या हम इस प्लेनेट के लिए यूजफुल है, महत्वपूर्ण है और कुछ ऐसा करने आए हैं जिससे एक प्रभाव हम इस जनरेशन में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ के जाएं, और वो भी केवल नाम कमाने के लिए नहीं, अपने उत्तरदायित्व के वहन के लिए। क्योंकि युग परिवर्तन करना केवल मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। जैसा आपने सुना ही होगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये दूसरे पशुओं की तरह केवल रोटी कपड़ा और आश्रय के लिए नहीं मिला है। ये कुछ ऐसा करने के लिए मिला है जो इन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को एक अलग पहचान देता है। बाकी सारी योनियां भोग योनि है, केवल मनुष्य योनि ही भोग योनि होने के साथ साथ योग योनि भी है। केवल इसी योनि में हम भोग भी कर सकते हैं और योग भी कर सकते हैं। हम अपने प्रारब्ध को भी ले सकते हैं और हम पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो इसको छोटे मोटे कारणों में जाया करना, व्यर्थ करना समझदारी की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये समझदारी ही हमें उत्तरदायित्व सिखाती है। ये समझदारी बुद्धि के पूरे विकास पे ही आती है। हमें 4 डायमेंशन का ये मानव यंत्र मिला हुआ है, जिसमें एक है शरीर, एक है मन, एक है बुद्धि और एक है आत्मा।
जिस व्यक्ति की चेतना केवल शरीर में ही है, वो वर्कर से अधिक कोई कार्य नहीं कर सकता। वो हम चारों डायमेंशंस में सबसे शुद्धता वाली चेतना है, जो कि बाकी सारे पशुओं को भी मिली हुई है। तो यदि हमारी चेतना केवल शरीर में रहेगी, केवल शरीर की ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जीवन जिएंगे, तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। जब ये चेतना मन तक पहुंचती है, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, हार्ट कह लीजिए, द सॉफ्टर एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्स, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, जब वहां तक ये चेतना पहुंचती है तो हम मैनेजर वाला कार्य कर सकते हैं, जिसको प्राचीन काल में वैश्य वर्ग कहा था। वैश्य वर्ग इस पृथ्वी के संसाधनों का आयात, निर्यात, व्यापार और सभी संसाधनों की पूर्ति सभी वर्ग के लोगों के लिए प्रदान करने का कार्य करता है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों की चेतना सबकॉन्शियस माइंड तक, मन तक पहुंची है, वो देवता बन जाते हैं। वो इस मनुष्य यंत्र में पशुता से ऊपर उठकर देवता बन जाते हैं, अन्नदाता बन जाते हैं, माई बाप बन जाते हैं, एम्प्लॉयर बन जाते हैं, दूसरों के घर को चलाने का एक जरिया बन जाते हैं। तो यदि हमने यहाँ तक जीवन जिया तो हमने अपनी पशुता और अपनी देवतापन को ही एक तरह से भोगा। जब चेतना और अधिक विकसित हो जाती है तो शरीर और मन से ऊपर उठकर बुद्धि में चली जाती है, और बुद्धि की चेतना की चरम सीमा को स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां पे प्रज्ञा जाके स्थिर हो जाती है। जिन लोगों के मानव यंत्र में चेतना स्थित प्रज्ञ हो जाती है, वही नेतृत्व करने के योग्यता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिसकी खुद की ही बुद्धि स्थिर नहीं है, जो स्वयं ही निर्णय लेते वक्त मन के बहावों के अनुसार, वेव्स के अनुसार निर्णय ले रहा है, कार्य कारण और कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत के अनुसार निर्णय नहीं ले रहा है, दूरदर्शी नहीं है, भविष्य देखने की क्षमता नहीं है, त्रिकालदर्शी नहीं है, जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं, वर्तमान में पकड़ नहीं और भविष्य का अनुमान नहीं, वो नेतृत्व कैसे कर सकता है? तो ये तीसरी चेतना क्षत्रिय चेतना होती थी, जिसको आज आप लीडर बोल सकते हैं, पहले क्षत्रिय इसका नाम था। जिसकी चेतना यहां तक आई वो लीडर हुआ। लेकिन अगर नहीं आ रही है, जितने लोगों की आवश्यकता है पृथ्वी को इस चेतना प्राप्त व्यक्तियों की, यदि वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए एक चौथा रोल, जिसको प्राचीन काल में ब्राह्मण कहा जाता था और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप उसको मेंटोर बोल सकते हो, मेंटोर की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। ये गुरु उस चेतना तक पहुंच जाते हैं जहां जाके आपको खुद कुछ नहीं करना होता, जहां जाके आप केवल निमित्त मात्र बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, योग की चरम अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है योगः चित्त वृत्ति निरोध, जहां चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। उस अवस्था में मनुष्य का ईश्वर से योग हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया, अगर शरीर में चेतना है तो इस मानव यंत्र में हम पशु हैं। यदि मन में चेतना है तो इस
मानव शरीर में हम पशु और देवता भी हैं। यदि बुद्धि में चेतना है, स्थित प्रज्ञ है, सभी समाधि प्राप्त करने की क्षमता आ चुकी है और विज्ञान में कोश को छू चुके हैं, तो हम क्षत्रिय या लीडर या ये कहिए सही मायने में ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। वो मानव चेतना है। तो कम से कम स्थित प्रज्ञ की चेतना होना आवश्यक है मानव बनने के लिए। हर व्यक्ति को लीड करना आना चाहिए। लीड करने का अर्थ है दिशा का ज्ञान। यदि हमें दिशा का ज्ञान नहीं है तो समझ लीजिए कि हम खो गए। हम एक ऐसी दिशा में चल रहे हैं जो कि हमें मंजिल की ओर नहीं लेके जा रही है। वी आर लॉस्ट। तो मानव बनने के लिए कम से कम स्थित प्रज्ञ होना, बुद्धि का पूरा विकास होना आवश्यक है। और यदि वो लोगों का नहीं हो रहा है तो उनको बनाने की जो फैक्ट्री है, गुरु, एक गुरु बहुत से लीडर्स को बनाने की फैक्ट्री होता है। तो यानी गुरु की चेतना उस स्तर पे नहीं पहुंची है कि वो एक ऐसी फैक्ट्री बन सके, लीडर्स की फैक्ट्री, वो लीडर्स की खेती कर सके, फार्मिंग द लीडर्स। तो ये मिस होने की वजह से पूरा मनुष्य समाज दिशाहीन हो जाता है। अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी उसको मंजिल नहीं मिल रही होती है। तो ये दिशाहीनता समाप्त करना गुरु का काम है। गुरु यदि ये काम नहीं करेंगे तो समाज बट जाएगा। तो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन उस प्रज्ञा अवतरण की, उस चेतना का अवतरण है जिसके द्वारा सभी मनुष्यों को दिशा भ्रम दूर करके सही मंजिल तक ले जाने का प्रयास है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम बना नहीं सकते, ये बना हुआ है ऑलरेडी। भगवत गीता में भी आपने सुना होगा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च। चारों वर्णों की रचना इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में गुण और कर्म के आधार पे निर्धारित है। गुण का अर्थ है क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, जो कि केवल 4 होती हैं: तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी और निर्गुण। तमोगुणी के प्रभाव से माइंड में, बुद्धि में अंधकार और गलत सत्य, फॉल्स नॉलेज, विपर्य वृत्ति पैदा होती है। रजोगुण के प्रभाव से संशय, डाउट, कंफ्यूजन, केओस, ये सब पैदा होता है। क्लाउडेड थिंकिंग। सत्व गुण के प्रभाव से निश्चयात्मक बुद्धि, सही दिशा का अनुमान, कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल का, कार्य कारण सिद्धांत का सही जानकारी, जीवन को विज्ञान में तरीके से जीने का रास्ता, ये सब खुल जाता है। तभी व्यक्ति लीडर बनता है, तभी वो नेतृत्व करने के योग्य बनता है। और जब व्यक्ति निर्गुण हो जाता है, गुरु हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति ही नहीं रहता, वो मनुष्यता से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि जो चौथी हमारी डायमेंशन है, सबसे नीचे शरीर से पशुता, मन से देवता, बुद्धि से मनुष्यता और आत्मा से दिव्यता पैदा हो जाती है। वो डिवाइन हो जाते हैं, वो मनुष्य स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। वो चलते फिरते मनुष्य रूप में दिखते हुए ईश्वर, अवतार, मसीहा, प्रॉफेट, मैसेंजर ऑफ गॉड बन जाते हैं। निर्गुण ईश्वर, निराकार ईश्वर, ऐसे ही आकार प्राप्त मनुष्य के द्वारा उनको निमित्त बना के
कार्य कारण सिद्धांत को, पुरुषार्थ को मैनिफेस्ट करता है, अवतरित करता है। तो जैसा आपने सुना होगा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, इस प्रकार का प्रकरण इस ग्रह पे चलता रहता है, और उसी का अब ये समय आ गया है। 4 जून 2011 से 4 जून 2025, 14 वर्ष के प्रोजेक्ट युग परिवर्तन फेज 1 का लक्ष्य भारत से कलयुग को, तमस को, डार्क एज को समाप्त करके सभी लोगों को जन समुदाय समेत द्वापर युग की ओर ले जाने का एक माध्यम, एक लॉन्च पैड, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। एकदम से सतयुग नहीं आएगा, और इन युगों की साइकिल को भी आप समझ लीजिए इन गुणों के आधार पे। जब कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानवता की सामूहिक चेतना तमस प्रधान है तो वो कलयुग है, रजस प्रधान है तो वो द्वापर युग है, सत्व प्रधान है तो वो त्रेता युग है, और अगर निर्गुण प्रधान है तो वो सतयुग है। तो अगले 4 वर्षों में सभी को तमस से बाहर निकाल के कम से कम मन की चेतना पशुता से उठा करके कम से कम देवता की चेतना तक अवश्य पहुंचना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए बुद्धि की चेतना या मनुष्यता तक पहुंच जाएंगे तो त्रेता युग हो जाएगा, और सभी की चेतना यदि समाधि में, ध्यान समाधि में पहुंच जाएगी तो वो सत्युग हो जाएगा, क्योंकि ध्यान समाधि में पहुंचने के बाद चाह कर भी आप असत्य बोल ही नहीं सकते। वहां तो सत्य ही बोला जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर्म करता है, अपने ही दृष्टिकोण से कर्म करता है। तो यदि दृष्टिकोण पहुंच गया वहां पे सतयुग में, त्रेता में, तो वहीं से कर्म होगा, मनुष्यता से कर्म होगा और दिव्यता से कर्म होगा। इसी आशा के साथ और समय ना लेते हुए एक बार फिर से मैं आह्वान करता हूं सभी आत्माओं का कि जो मेरे साथ युग परिवर्तन करने के लिए पृथ्वी पे आ चुकी हैं, वो अपनी चेतना को आत्मा के स्तर पे लेके जाएं और युग परिवर्तन में निमित्त बन जाएं। तो आज जो हम 5 स्पीकर्स को लेके आ रहे हैं, 5 वक्ता जो हैं, वो अपने अपने उद्गार माई विजन ऑफ गोल्डन एज, स्वर्ण युग के बारे में मेरी क्या विजन है, क्या दर्शन है, इसको हम सब के साथ साझा करेंगे। सभी लोग महत्वपूर्ण हैं, सबकी विजन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी स्तर पे मनुष्य को पशु से देवता, देवता से मनुष्य और मनुष्य दिव्यता की ओर ले जाने का कार्य कर रही है। अगर ये सब एक साथ आ जाते हैं तो जो प्रभाव इस पृथ्वी पे देखने को मिलेगा, जो आनंद आएगा, क्योंकि जब डिवाइन प्रोसेस चालू हो जाए और आनंद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रज्ञा के अवतार को सभी अपनी अपनी चित्त पे धारण करें। ये एक व्यक्ति के अवतार की बात नहीं है, एक राम कृष्ण बुद्ध की बात नहीं है, सबका अवतार। जब हम कह ही रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका अवतरण भी उसमें जोड़ लीजिए, सबका अवतार। और इसी सबका अवतार को हम 18 दिन के समिट में, SALN समिट में, जिसमें से 17 दिन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस के, उनको एक एडिशनल प्लेटफॉर्म देंगे प्रोजेक्ट युग परिवर्तन विजन के साथ, और 18वां उसमें गोल जोड़ेंगे सबका अवतार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फॉर ऑल। सबके अवतार के बिना इन 17 सस्टेनेबल गोल्स को हम नहीं पूरा कर सकते, असंभव है, क्योंकि केवल अवतार ही इस तरह के महान कार्य कर सकता है।
तो आशा है आप उन 18 दिनों में भी हमारा साथ देंगे और पहले दिन में प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भारत को वहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया जाए, जिससे ये जो 10 लाख सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स क्रिएट करने की प्रक्रिया है वो संसाधनों की प्रतीक्षा ना करे। बिग मिशन, बिग रिसोर्स के कारण उसकी जो स्लो डाउन हो रही है वो ना हो। कल भी आप देखेंगे कि J&K के गवर्नर जी एज अ चीफ गेस्ट आएंगे और गायत्री परिवार जिनके फाउंडर श्री राम शर्मा आचार्य युग निर्माण योजना पे कार्य कर रहे थे, उनके अब के जो चेयरमैन हैं प्रो वीसी हैं पांड्या जी, वो भी उपस्थित होंगे। उनकी प्रेजेंस में और बाकी सारे जो वक्ता रहे हैं इन 5 दिनों में, उनकी प्रेजेंस में हम सिनर्जी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे और उसके बाद आने वाले 6 समिट्स के बारे में भी, 6 ग्लोबल समिट जो कि इससे भी बड़े स्तर पे आयोजित किया जाएगा, उसकी भी घोषणा करेंगे। तो आप आज भी पूरा अटेंड कीजिए, कल भी अटेंड कीजिए और परसों जो कि हमने एक रिजर्व डे के रूप में रखा है, उसमें सीधी बात के लिए, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के लिए उपस्थित रहें। आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका मैं सीधा उत्तर दूंगा, वहाँ पे आपको अनम्यूट भी किया जाएगा, तो कृपया अवश्य पधारें। इसी के साथ आगे के रूपरेखा के लिए और कार्यक्रम के लिए मैं अपने कलीग प्रवीण मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पे आए और हमारे आज के पहले वक्ता को स्टेज पे आमंत्रण करें। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है कि इस महासभा का मकसद क्या है और किन परिधियों में हम इस मंच से प्रसारित विचारों व सूचनाओं को श्रवण करें। आगे के कार्यक्रमों की भी आपने सूची विस्तार रूप में बताई। आपके दिशा निर्देशन में आज की गतिविधियां प्रारंभ करते हैं। कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आज हम सबको अवतरित होना है, प्रभु ने अवतरित हमारे माध्यम से होना है। तो आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। Once again, good morning friends, a warm welcome to all of you. Namaskar. On behalf of all of us at the Defined Values Group and on behalf of our event partners, the CRDG Foundation, the Opulence Group, the Research Foundation of India, we cordially welcome you all to this mega event, the first of its kind project YugParivartan Global Summit 2021. We have made earnest efforts in inviting prolific thought leaders and domain experts to share with all of us their vision of the golden age and to explore ways of integrating their good work into the creation of a new world order. Today, we have 5 eminent speakers from across various walks of life. We have with us Shri C.A. Shindeji, Dr. Arun Joshi, Dr. Satish Kumar Gupta, Acharya Prem Bhatia ji, and Shri Upendra Pandey ji, who shall be addressing us. We shall talk more about them when they come to address us. Now for the first speaker, Shri C.A. Shindeji. Shindeji is a very close friend, a father figure, and a guide for most of us in the Tamil Nadu chapter of Defined Values Group, which operates from Chennai. A retired zoology professor who worked at Sangli and Pune for 37 years and authored 10 textbooks in zoology for undergraduate students. A very senior life member of the Theosophical Society, Sri Shinde has been rendering yeoman service to the society since 1975. A veteran of many lectures, seminars, study classes, School of Wisdom, he is an Indian national lecturer and international speaker. He heads the library, Adyar Library and Research Center, which we Chennaites know is world famous, established in 1886. It has 3 lakh titles and 45,000 handwritten manuscripts to its credit. He has given many short talks and participated in international symposiums. And during the grand convention held at Adyar,
he had compiled the Watchtower articles of Mrs. Radha Bernier, the then president of the society, and published them as a book titled The World Around Us. As an international speaker among various countries, he has visited Sri Lanka to the Crotona Institute of Theosophy. With universal brotherhood of humanity, without distinction of race, creed, sex, caste, or color as its founding principle, the Theosophical Society, we all felt, is a natural ally in the project YugParivartan. We present to you Shri C.A. Shindeji to share his vision of the Golden Age and to tell us all how the Theosophical Society could work hand in hand with us in this beautiful journey. Over to C.A. Shindeji. Shindeji, kindly open your camera. It's okay. Am I audible? Yes, Shindeji, go ahead. Shindeji, you are very much audible. Yeah, please go ahead. Okay. It is on the corner, no? Shindeji, your audio video is okay. Okay, okay. Yes, yes, What I am seeing, my picture is on the corner. That's why I am worried. Okay. It's no, okay. It's in the center. It's okay. Okay, okay. So, sabhi ko namaskar, namaste, vanakkam. Good morning, brothers and sisters. My greetings and good wishes for the success of this global summit. Thank you, Praveen Mehraji, for the kind words to introduce me and express. I am really very grateful to you. So I will begin my talk with this Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Asatoma Sadgamaya, from the unreal lead me to real. Tamasoma Jyotirgamaya, from darkness lead me to light. Mrityorma Amrutangamaya, from death lead me to immortality. Om Shanti Shanti Shanti. Honorable Chief Mentor Hitesh G. Chandel and Honorable International President Tim Boyd, President of the Indian Section P.H. Goyal, my colleague, International Speaker Shikhar Ji, who is assisting me for the technical difficulties. And also, I must thank to Arvind Tiwari Ji, Professor Sanjay Kumar Sharma Ji, Tamil, Srinivas Sky Ji, and all respected speakers of the day, all the souls visible and invisible, listening the voice of this global summit, and special thanks to the organizers team who has done hard work day and night. I am really grateful to all of you for giving me this honor and also responsibility of how it helps, how the Theosophical Society has the vision of the welfare of humanity and bringing a step forward to humanity to the golden age. So what I think, human regeneration is the urgent need to take humanity to golden age. With this purpose, the TS has its objects and mission to serve humanity and work for human welfare.
The Theosophical Society, if you look at their objects, the Theosophical Society was formed in New York on 17th November 1875 and incorporated at Chennai, Madras on 3rd April 1905. And its three declared objects are: 1. To form a nucleus of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste, or color. Second object is to encourage the study of comparative religion and philosophy and science. And the third object is to investigate unexplained laws of nature and the powers latent in man. Thus, the Theosophical Society, uniting people of all religions, of all nations, to form a nucleus of universal brotherhood without any kind of distinctions. This nucleus is a living thing. So people are coming together, living together, working together, and thus entering into the brotherhood of joy that uplifts them with the effortless effort. As I said, nucleus of brotherhood is a living thing, and also it is the foundation of universal morality. Morality is to develop the vision of seeing oneness of life. Life is one, akhanda. So all of us belong to that universal life force, and therefore we are in one universal family. That is what our Hindu tradition says, Vasudhaiva Kutumbakam. So this is what the first object involves, to form the nucleus of universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste, or color. The second object is to encourage the study of comparative religion, philosophy, and science. So it is a synthesis of religion, philosophy, and science. So religion is definitely a responsibility, swadharma, and philosophy is a philosophy of perfection, and science is the science of spirit. So that spirit of service need to be developed, whatever may be our faculty. So theosophy, in way, synthesis of science, religion, and philosophy. It is the science of spirit. It is the philosophy of perfection, and it is the religion of responsibility. And the third object points to investigate the unexplained laws of nature and the powers latent in man. This is actually what we say a self-actualization, and develop our intuitive faculty by study, meditation, and selfless service. And the mission of the Theosophical Society, we have this vision and we have also the mission to work. And this mission, which we started actually in 3 years back, not in 18, on 2nd July 2018, and this Theosophical Society's mission statement was approved by its General Council, and the present international president Tim Boyd from the Chicago, and he, along with its council, he has given this mission, and we are working with this mission. So we have vision, we have mission, and mission is to serve humanity by cultivating an ever deepening understanding and realization of ageless wisdom. Here we must remember this ageless wisdom is the eternal wisdom, and this is also what we call in our Hindu term Sanatana Dharma. So the very first
to serve humanity by cultivating. What to cultivate? Ever deepening understanding of this ageless wisdom. First understand, realize, and then spiritual self-transformation and the unity of all life. With this mission, we are moving forward. So to move towards the golden age, first we need to be ready and work out our own karma enthusiastically and prepared to serve humanity. As I said, our technological and engineering skill, we have made definitely comfortable human life, but not yet achieved the peace in the world or peace in our own mind also. Because whatever technological and engineering skill we have developed is used in armament race, producing fighters, bombers, nuclear bombs. What it indicates, that means we are also planning to kill human in large scale. I am sorry to say, but this is what the total human mind is working. On one hand, it thinks of progression of humanity. On the other hand, under the influence of fear and security, it is producing, or we are influenced by the armament race. So it is quite possible to all of us to be a better human being, really, if we take our evolution in our own hand and bring inner revolution within ourselves. Since last 147 years, the Theosophical Society International is working with this goal concern, rather this is goal and global concern. As we are aware, self-realization is the aim of human life, and spiritual self-transformation is the individual responsibility. So, the Theosophical Society points towards the human regeneration through individual regeneration. And for this, let me tell you, there is no authority right from the founders imposed on any member their teachings or their opinions. So, this indicates there is freedom of thought and universal brotherhood, which are the two pillars of the Theosophical Society. With these two defined values, you may call them as the defined values, because freedom of thought and universal brotherhood, these are the two pillars of the Theosophical Society. With these two defined values, its first object is to form the nucleus of universal brotherhood without the race, creed, sex, and color. This is very important object. Now I would like to focus or attract your attention to the 5 ideals of the Theosophical Society. Let me make you clear in the beginning that we have Theosophical ideals and we try to live those ideals. It is only because when we fill our minds with these ideals, our world becomes beautiful. Ideals should not remain as concepts. Ideals, if they are not lived, then they become mere idols. And we, the members of the Theosophical Society, are very clear that we don't want to be mere idol worshippers, but to make them as a living power in our life. In the center, you see ideal of universal brotherhood. It is to form the nucleus of the universal brotherhood, and this is incorporated
in the first object of the Theosophical Society. So the mission is to form the nucleus of the universal brotherhood, and it is included in the first object. Then ideal of tolerance. This is included in our second object, where we encourage the study of comparative religion, philosophy, and science. So what we expect, we tolerate all the opinions and encourage them to study science, philosophy, and religion. This ideal of tolerance is included in our second object of the Theosophical Society. Then ideal of knowledge. See, self-knowledge will liberate you. That is what Shankaracharya told. So this ideal of knowledge is included in the third object of the Theosophical Society, to investigate unexplained laws of nature and also hidden potential of man. So this can be done by disciplined living, clean life, open mind, pure heart, and with the practice of daily meditation, study, and selfless service. Then, with these basic three things, object number 1, 2, 3, ideal of universal brotherhood, ideal of tolerance, ideal of knowledge, it should not remain with you, but it must express into the service. So the ideal of service to the others, it comes naturally. If you have that self-knowledge, if you're really meditating, you cannot be inactive. You go to serve the others. So that the ideal to serve others then becomes our fourth object, ideal here. And the force behind all this is not only our own force, but there are many invisible souls, because we believe even if the physical body dies, the thoughts remain. They have their life, and such great soul thoughts are there, and they are helping us, aiding us in such kind of good work for the humanity. And we believe in this ideal of perfected beings. As I said, it is a philosophy of perfection. We are imperfect, but we believe in the perfected beings. We call them as the Mahatma, the masters of the wisdom and compassion. So we have not yet reached to that wisdom, which we call prajna or intuition. That true wisdom received people are there. We have also not yet received to that compassion state. So there are the masters of the wisdom and compassion. So that what we call, we believe in them and we work with these ideals. So brothers and sisters, human regeneration through individual regeneration becomes one's accountability or the duty. Rather, it is due to humanity, because duty is self-realization with the discipline of disciplining oneself. Why human regeneration is needed? It is only because although we have progressed in our comforts and material world, we are not yet evolved morally and spiritually. Moral development involves to develop the power of seeing oneness of life, feeling oneness of life. And spiritual development involves to be really a real seeker of truth. Whatever may be, we are working in different faculties. We may be belonging to the science or philosophy or religion faculties. We need to be a real seeker of truth. So spiritual development involves being real seekers of truth, and moral development involves developing the capacity to see the oneness of life. As humanity has not yet developed
morally and spiritually, it is missing its right direction. So to take the humanity to golden age, it is our duty to give it a right direction. So Theosophical Society has its motto, no religion is higher than truth. Satyanasti Parodharma. Truth as we see today, we celebrate Environmental Day and show our ecological awareness, no doubt. Definitely that point towards the life's interconnectedness, interdependentness, and also interrelatedness. So we are aware of different pollutions also. When we are aware of this ecological awareness, we are aware of different pollutions like air pollution, water pollution, soil pollution, but we are not yet fully aware of our pollution of our mental world. Humanity is caught in its own psyche, and therefore it is our attention must be focused where our psyche itself is becoming the impediment. There has to be a radical change in our psyche, which is full of selfishness, competition, comparison. In such polluted mental world, you know what happens? Whether we want it or not, we feel loneliness. Whether we want it or not, we feel depression, we feel insecurity, fear, etc. So human mind is getting polluted because of mental world pollutions. So out of insecurity, out of fear, human morality is degrading. So if one is really observer, he can see what is happening in the society. See how religious or how the religions are destroying the morals, how lawyers are destroying the justice, how press is destroying the information, how bankers are destroying the economics, how politicians are manipulating the public mind. I am not criticizing anybody, just as an observer, one can focus his attention and see how the human mind is getting polluted and it is influencing the public mind. And out of that, there is no control over it. There is no emotional balance. So they get demoralize themselves, and this demoralization we see in different faculties of the nation and also the world. So this is the moral degradation point I would like to focus. We do see humanity's degradation, human degradation is there, and degeneration is there, and therefore human regeneration is the purpose of the Theosophical Society, to take it to the golden age. It is therefore Theosophy teaches self-culture and not self-control. It teaches self-culture. Self-control comes automatically. And it also teaches mutual culture. Self-culture and mutual culture. That is what Theosophy teaches us. For mutual culture, we need to develop team spirit and brotherhood. And we develop team spirit only when we come together and work with the vision of human regeneration with a constant eye towards the human progression and perfection. That working with team spirit and brotherly affectionate, we are working locally in our lodges. We do have study groups locally in all villages, in all cities. So locally we work. At state level we have federations. At national level we have sections. And at headquarter level we have international headquarter in India, that too in Adyar in Chennai. And this is how
the Theosophical Society is working. Theosophical Society is, in India, it is mainly known by Society of Annie Besant. Actually, it is the founded by before, but Annie Besant is the second international president. She did a wonderful work in India, and she influenced and inspired many members. And that time, Indian section increased remarkably. Many people joined in her project, not only project, but for the work for the freedom of India. You know, she is the first woman president of the Indian National Congress. So many people joined her in her revolutionary movements, like revolution in education, revolution in religions, revolution in social tradition, revolution in political reform. Regarding political reform, she said, and it is very important for our Yuga project, what we are planning for. And her idea is very good. Regarding political reform, she said, we must aim at building up of complete self-government from village council through district and municipal boards to a national parliament with global concern. She also did reformation in Indian education. As we know, she is the pioneer leader to start Banaras Hindu University. She gave her own college to the university without any condition. And even today, we have Alcott Education Society with a free up to 12th standard class. We give them everything free. Alcott Education Society is working for that. Besant Education Fellowship has got many colleges, ladies hostels, and many what we say management colleges, etc., in different parts of the India. And recently, our present international president Tim Boyd started a school that is having Center for Transformational Education. It is based on Theosophical teaching. We call it as ATA, Adyar Theosophical Academy. And for this, we all are doing work as educational reform. As we know, in India, Theosophical Society is identified as the Annie Besant Society because of her remarkable work. And even I would like to mention here, we have Besant Memorial Animal Dispensary also. Now in Chennai, it is increasing tremendously. And some donor has come forward to donate 67 acres of land for this animal welfare center. And we have a dispensary of animal. Many animals are having diseases, and you know, lioness died by the corona also. So now these are the problems. I would like to share Mahatma Gandhi himself said about the Dr. Annie Besant, who awakened India from her deeper slumber. India is not fit without the imbibing Annie Besant's qualities like firmness, simplicity, self-control. That is what I want to focus, how Theosophical Society is working for the last 147 years. So the Theosophy provides the needed perspective to know humanity, what we have and where we are. Unless man knows what he is, what direction he must move, and how can he do the right things at right time. So it is vital for human being to be aware of himself and get self-knowledge through study, meditation, and selfless service, for which Annie Besant gave a universal prayer, and that indicates her looking at the all the kingdoms. So here, this is the universal prayer we used to
pray or we used to invoke in the beginning of the any lodge meeting, etc. So it says, "O hidden life, vibrant in every atom." This is invocation to the mineral kingdom. Because if you want to tune with the mineral kingdom, you must resonate your vibrations with the mineral kingdom. Try to understand that hidden life, you can become one with the mineral kingdom. So, O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature. This is again invocation to the animal kingdom and vegetable kingdom. How animals and vegetables are very close to the human kingdom. And then the O hidden love, embracing all in oneness. This is the love factor need to be developed in the human kingdom. So it is the invocation to the human kingdom. O hidden love, embracing all in oneness. And then may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Here again, it is the man only who can have this capacity of consciousness to resonate not only with the animals and plants, but also with the mineral kingdom. So if we have this at the background of such kind of prayer, there is possibility of becoming one with the all kingdoms. So remember, the word theosophy is little bit seems to be very difficult, but it is a Greek word. Shindeji, I Okay. request you to kindly conclude. We have speakers in the waiting. Yes, within 1 minute I will conclude. Thank you, sir. So we are aiming essential unity of all religions, encouraged by the motto of the Theosophical Society, there is no religion higher than truth. The motto is originally Sanskrit, Satyanasti Parodharma, from the Maharaja of Varanasi. Theosophical work begins from the ideas, because we know ideas rule. As society is told, strong minds have ideals and ideas. Socrates has told this, strong minds have ideas, average mind has events, and weak mind has the people or discussion, etc. So I would like to focus one more slide. Our most of you know that the Theosophical Society is the worldwide organization spread over 70 countries in the world, with its membership is about 30,000, and half of the membership is from our India. So Indian membership is 15,000 from the Indian section, and it was founded in New York, USA on 17th November 1875. So we are completing 150 years by the end of 2025. Madam H.P. Blavatsky, a Russian genius, an exceptional human being, author of Isis Unveiled and Secret Doctrine, who had a contact with occult world and therefore brought this message of theosophy to the world. She is known as the messenger of the 18th century. And I must not forget to tell, because Colonel Olcott, the first founder president of the Theosophical Society, he collected, or he is the first person who organized and called a meeting of all religious leaders together and asked them to share their literature. And he collected all over the world the old manuscript, palm leaf manuscripts, and he established this Adair Library in 1886. I am looking after this Adair Library as the head of the department. It has got 45,000 palm leaf manuscript and 3 lakhs of printed books. It is a big international library. I invite all your
Pandits and whoever want to study this Sanatana Dharma, which is in a manuscript form in the palm leaf, we are digitalizing. So it was he who had this vision of preserving Vedic knowledge of Eastern civilization expressed in the palm leaves, etc. I am showing these three great truths. You can read them, and in concluding, I can say, so I think it is essential to focus our attention towards world transformation and such wake-up call for YugParivartan, so that in near future we hope there will be no war, no deforestation, no exploitation, no race armament, no literary or no unhygiene, no pollution, no population. That is what we are saying, the golden age. The source is in human mind. So human mind need to be tackled and transcended towards the global concern, and really to share and care. Let us work together, even if we are working in the different institutes. I thank you all for giving me this honor and for listening me patiently. Thank you, Praveen Mehraji and Hitesh ji. Thank you very much. Hope I have not taken much time. Thanks, Shindeji. And like other eminent speakers, we felt that 30 minutes is not a proper justice to listen to this enchanting communication. So we invite you to participate in Self-Realized Mentorship Network Global Summit 2021, which we are organizing in the month of August, wherein people from all faiths would be brought to a platform to talk about their philosophy and arrive at a common ideology, common philosophy for the world. That only will unite the world into Vasudev Kutumbakam, or one family. So thanks a lot. And the philosophy of Theosophical Society also comes extremely close to the Gyan Yoga of the ancient Vedic wisdom, and it definitely will add value to the overall progress of Project YugParivartan, thereby Theosophical Society also getting empowered, because when we create synergy, it is always win-win. So that win-win is in the making, and with your efforts, let them come for our library. Yes, so we'll do that. We will integrate it somewhere into the system. Thanks a lot. So with this, may I invite my colleague Praveen Mehraji, the anchor of the day, to invite our next eminent speaker on the dais. Thank you, Guruji. Thank you, Shindeji. I think today the movement of Project YugParivartan is reached by 30,000 members, a library of so many manuscripts and titles. I think we've grown richer by your address. Questions to you will be coming at the end of this discussion in the form of a group discussion. So kindly stay on, and also kindly stay on, all friends who have come to follow C.A. Shindeji. There are good speakers lined up for you as well. The next speaker for the day, friends, is Dr. Arun Joshi. India lives in its villages. Many great leaders of national and international repute have come from an agricultural background. Our village feeds us, clothes us, provides us inputs to run several industries and services. To help our farming fraternity and to guide it with a scientific temperament, we have several stalwarts working silently. One such stalwart is Dr. Arun Joshi, who holds a PhD in agriculture with an MBA in project management. Project management, something Guruji will be very pleased about. Dr. Arun Joshi is a development professional with over 36 years of experience in agri-business management. Dr. Arun has a long stint as a CEO in Janaki Devi Bajaj Gram Vikas Sansthan. He has a wide exposure to rural and urban development and has worked with many organizations, including the United Nations. He has, to his credit, 40 research publications in national and international journals. Arun Joshi has done pioneering work in participatory technology development,
participatory plant breeding, participatory varietal selection and promotion, and developing farm producers companies. We invite Dr. Arun Joshi to share with us his mission and tell us how he sees it integrating with the vision of Golden Age as envisioned by our CM, Shri Hitesh Chandel-ji. I present to you Dr. Arun Joshi. Yeah. गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा वीडियो स्टार्ट शायद आपको वहां से करना होगा। Yes, now you can try, Arunji. Yes, it is working. Yeah. Thank you very much. I'm not using any PowerPoint or any other presentation. I come from a very different background. I do have inside me, I do have the equal quest for spirituality and actualizing the spiritual freedom. Working for last 38 years in the villages, I didn't get any time actually to really pursue the spiritual path. But my spirituality only, goes to villages, to the poor, to women, and to youth. My vision, and I would like to make a small correction in my introduction. I am an ex-chief executive now. Only this March, I gave up this full-time assignment as chief executive officer of the Bajaj Foundation, and now I'm based at Indore, and now I am a freelancer. So thank you very much. Can you bring your mic closer to your mouth? Yeah. Okay. I hope. I said I'm an ex-chief executive now. Only last March, this March 31st, I gave up this full-time assignment of the chief executive in Bajaj Foundation. I'm now based at Indore, and I'm now working as a freelancer. It's wonderful to hear Shinde Saab and to Chandel Saab and to Mehra Saab and discussing many things. And I've been into the transit for last fortnight and not putting myself in one place. So, my thoughts are just straying. But I have three things very clearly in my mind, which I have been working for last 3.5, even more years, actually, decades. The golden age. What is a golden age? It intrigues me. It gives me, shivers also. What is golden age? What we should say golden age? Everyone will define the golden age in different way, and the chief mentor already defined it. Shinde Saab has put in a lot of efforts and defined the golden age. To my mind, the golden age, and my vision about the golden age is limited to healthy soils, because the country right now is reeling under stark poverty, starvation, low productivity. 142 million hectares of our lands soils are sick now. 99% of our soils are sick. My second focus, my vision for the golden age is flowing rivers, ever flowing rivers. Unfortunately, the river network in India, very elaborate river network in India, and it's completely now in shambles. Even the rivers, large rivers like Yamuna, which has great relevance to our religion, to our mythology, to our spirituality, if someone says it is a dead river, it really disheartens me. I feel really, really ashamed. I really feel, are we really Sanatan Dharmis who cannot look after our sacred rivers? So second vision to me, my mind, is these ever-flowing rivers, and how it is possible is yet to be seen. A lot has to be done, and I have been working on these 2 points throughout my career, my professional career, I would say. And the third thing is, happy youth. And when I say youth, it is not just the biological age of a human being. It's basically the mindset, the attitude, the young mindsets, young attitude. Even a body, 60-year-old, 70-year-old, or 80-year-old body may have an attitude of a
a young mind actually. So these are the three things which I have been pursuing very strongly. And my take on this golden age is on these three lines. Why I would elaborate in maybe 5-7 minutes what I have been doing it throughout, working in the rural development, the urban development landscape, moving around many states in the country, moving around in the villages, working with various levels from grassroots, and I still identify myself as a campaigner. No titles, no positions, no posts, just a campaigner. Wherever I work, wherever I go, wherever I see that if there is a campaign, I would join the campaign and I would try and be in the front row of the campaign. So to my mind, I have been in the rivers, working on the rivers. So in Madhya Pradesh, we had a mission on the river, the Narmada mission on the river, all rivers covering, so that to make these rivers flowing again. Why we wanted this? Because everyone wants water. That's the elixir of life. We need clean water. All cities, all towns, all villages, agriculture, domestic use, animals, vegetations, water, water, and water. Water is life. So if we don't have the rivers, we won't have the water. If you don't have the flowing rivers, we won't have good monsoon. If you don't have the rivers, we won't have good vegetation. If you don't have the river, we won't have enough agriculture. If you don't have the river flowing, we won't have enough food. If you don't have the river, we won't have wildlife, animals, aquatic life. So I've been working on this, and that's my take on the golden age. We really have to, this huge country of 138 billion has to really look after its river. If the rivers are dying, humanity is dying in my mind. I may be very extreme in my thinking, but that's how I look at it. And the second, I said the soils. I've been working on the soil. I worked in chemical fertilizer industry initially when I started my career as a young postgraduate in agriculture with a lot of ideas in my mind. Went into the villages, started teaching how to use these chemicals and how to grow crops and how to increase the productivity and all that. But I very immediately realized that what I have been doing is all wrong actually. So I have to correct myself. अरुण जी थोड़ा सा और क्लोजर लाइए इसको, माइक लो की आवाज कम आ रही काफी. Yeah. So that's how I look at the soil. All soils are dead soils now. Unfortunate, very unfortunate. We're talking about the golden age. You're talking about the spiritual awakening, and we are not concerned about the life in the soil. Soil word itself is the solam, which means something which is living. And in India, we have dead soils. We're putting huge amount of chemicals. When we start talking about the organic agriculture, it immediately falls either into the legislative circle or the economic things. People don't see it from the point of view of the living organisms into the soil, and that's where we really have to work very hard. And the third thing, disenchanted youth from the villages running into the cities, trying to get some work, some jobs for their livelihood. And our understanding of livelihood, very unfortunate that we have a very skewed and very myopic thinking about the livelihood. We just think that it is only the earning some money actually into the pocket. That's not. It is the quality of life to my mind actually. And if we talk about the quality of life, it's not just the money, it's all the things which I think people like you, the eminent speaker, very clearly said, the chief mentor very clearly said, Mehra Sahab very clearly stated. And I was going through, and unfortunately I do not know much about the this project YugParivartan, because I'm the first time I've been joining your group and trying to understand what it is doing. But my take on these things is very clear, that if we really wanted to have the awakened spirits, awakened souls and all souls, जैसे कि अभी अभी चंदेल साहब ने भी कहा कि ये अवतार एक का नहीं होना है, पूरे समाज का अवतार होना है, पूरी 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 जनसंख्या का अवतार होना है. तो अवतार कैसे होगा जब तक कि हम
लोग जीवन की गुणवत्ता के विषय को नहीं समझेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं समझेंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से आने वाली है? इज इट कमिंग फ्रॉम द मनी ओनली? No, I don't think. It is one important thing, but it is something more than that. So to my mind, these are the three things. My vision is very clear in my mind. Wherever I get a chance to work on these three things, I keep I don't ask any other question actually, and I just become a campaign member and I try and contribute to that. I've been working on these aspects in all these years, wherever I have been, with the parastatals, with the international organizations, with smaller NGOs, the civil society, the communities, these everywhere. If I find the opportunity to work on these three things, I try and contribute to this. I see very strongly my personal vision converge with It's again going far. Just yeah. Project YugParivartan. Very clearly, I can see that yes, it can. My vision can converge very well, because you're talking on a grander scale. You're talking about the spiritual awakening, but at the same time, if it has to put on the ground actually into the practice, these are the things one needs to do actually as a project. And a project, to my mind, is something which has identified a problem, identified there is an intended solution in the way, and then we are trying to put that solution into practice actually. So if YugParivartan is a project, I would be more than happy to really be associated with this project, working on these three things. And if these three things start taking roots into the communities at large, I think there would be some, germination of this very idea of the golden age, definitely. Otherwise, we will keep, harping around many things. We will keep our own manipulated perspectives, and we would keep trying pulling each other, and in the work in the silos in watertight compartments. So I think we need to really have a continuum of this whole thinking, and I see my vision very much converging with the project YugParivartan vision. I would be more than happy if these are the things, if the Parivartan project things that are prominent, that are important for the spiritual awakening. I, as a small member, as a small campaign member in this project, would be very happy to put in my efforts wherever it is required. I think there are number of speakers, and my preparation for today's presentation is limited to my these 3-4 things I was reading and how it goes on. I would be more than happy. I thank you, the chief mentor. I thank you, the Chandel Saab, and I thank you everyone who has been helping me to put this Zoom call in place properly with the background and all, because I was fiddling, because I shifted in a house. For the first time, I'm talking from this new place. So thank you very much once again. I look forward for a continued discussion dialogue with Project YugParivartan. Thank you very much. Pranam sabhi ko, namaskar sabhi ko. Thank you. Thanks a lot, Arun Joshi ji. And of course, we know that you have recently shifted to a new place, so there would be certain challenges related to technology and all. But still, the overall content that was covered is very much relevant to the construction of golden age on this planet, from the vision to bring it to the actual physical ground. And we really appreciate and invite you to join the platform, Project YugParivartan Synergy platform, in which we are inviting people from all walks of life to come together and through a structured way, spread the wisdom all across the world. And as you said, yes, it is a project, and the definition of the project includes the begin date and the end date. So this project is in 2 phases. Phase 1, to terminate Kali Yuga or Dark Age from India, with the start date as 4th June 2011 and end date as 4th June 2025. 14 years project for India,
And then from 4th June 2025 to 4th June 2050, 25 years as phase 2 for rest of the world and their integration into United. Of course, we have already taken this name, United Nations, but this one would be named as Defined Values Group, the name of the new ecosystem of all those individuals, organizations, and countries who have accepted the values defined by the ecosystem through cause and effect principle, and all of them are working towards the golden age. So this is the name of the new ecosystem. So I welcome you to join Defined Values Group, and with all your experience, definitely 1 + 1 will definitely become 11. So with this, I invite my colleague Praveen Mehraji to invite our next speaker of the day onto the stage. Over to you, Praveenji. Thank you, Guruji. Before I move to the next speaker, dying soils, sick rivers, happy youth. What amazing vision, sir. Very frugal in sharing about self, a 4-line profile, no expectation of any kind of gratification, but at the forefront when it comes to working on the ground. It is Karma Yogis like you, Dr. Joshi, that will bring about the golden age. The causes you stand for truly need you to integrate with this humongous Karma Yudh that Project YugParivartan is embarking upon. Karma Yudh, wow, sounds so inviting, isn't it? Karma Yudh ka ahvan is manch se ho raha hai. This is an exercise in pulling up like-minded people, in contrast the normal pulling down that was happening all this while. So kindly join the movement, strengthen it, sir. Our third speaker for the day, Dr. Satish Kumar Gupta. Project YugParivartan is certainly a matter of the heart as much as it is a matter of the head. And who better to talk about matters of the heart than a celebrated cardiac surgeon of world repute, Dr. Satish Kumar Gupta. Dr. Gupta is MD, FCCP, FIAE, FIMSA. Presently, he is the Director and Senior Consultant, Cardiology and Medicine, and CAD Project Coordinator at RMM Hospital and Trauma Care, Rajasthan, India. His article, MAOHT, Mount Abu Open Heart Trial, is ranked first among the 20 articles, the selection being made out of 2.5 lakh research papers published in the category and ranked on the basis of most cited and most visited biomedlib by biomedlib.com. I think that's amazing. 2.5 lakh out of that top 20. Word of the hospital that Sri Gupta runs and its philanthropic aims has gone around. Financial support has been forthcoming from the Americas, Australia, Germany, Holland, Hong Kong, India, Japan, Kenya, Mauritius, Philippines, South Africa, and United Kingdom. Prajapita Brahmakumari's Ishwariya Vishwavidyalaya, or Brahmakumari's World Spiritual University, BKWSU, as it is known in the Western world, is an international spiritual organization. It has been working at all levels of society for a positive change for the last 70 years. The organization offers a wide range of educational programs through its more than 8,000 centers in more than 100 countries. The Brahmakumari's institution acknowledges the intrinsic goodness of all people. The university works alongside individuals and organizations in all areas such as healthcare, education, youth, social services, the criminal justice system, and interreligious dialogue. To share his vision on how the heart and the head would work in perfect sync in the golden age, we call upon Dr. Satish Kumar Gupta to share his vision. Over to Dr. Satish. Good afternoon. At the outset, I am very thankful to the organizers of this project, YugParivartan, the chief mentor, Shri Hitesh ji, Shri Praveen Mehraji, and my previous speakers, Mr. Arun Shinde ji and Dr. Arun Joshi ji. This project itself suggests that we are creating a new word order, which is called as golden age. And how we can do it,
I am associated with Brahma Kumaris for last 36 years. And when I was at All India Institute of Medical Sciences doing my post-graduation studies, and then I came to in contact with Brahma Kumaris. And for last 26 years, I'm at Mount Abu. I shifted from Scott Heart Institute, Delhi, and started a project with in collaboration with DRDO. Then the Director General of DRDO, Dr. APJ Abdul Kalam. And for last 26 years, I'm basically focused on this area, how we can make this world a healthy, happy place. And I'll be sharing with you how we can do it. Because we have been conducting this research for last 24 years now, and I'll be sharing with you my experiences. Presentation. Just a minute. Dr. Satish, a little bit louder also. Okay, fine. Yeah. Yes. Am I audible now? Yes, it's better because if it can be more louder, that would add value. Yeah. Just a minute, I'll just set my slides. So basically, at present, We all appreciate, sir, that you have taken time off your busy schedule and acceded to our request. Take your time, no issues. Okay, sir. So this project YugParivartan Synergy Platform with an aim to unite the humanity as one family, one country, one workplace, and one philosophy. In Brahma Kumaris, for last we are having this institution working in India and abroad for last 86 years now, and we have our centers in 146 countries and more than 5,000 big centers and more than 10,000 sub-centers and more than 50,000 Gita Pathshalas. We are almost everywhere in the country and different countries in the world. And our aim is to create golden age. And our concept is very simple. We all are souls and we are all sons of the Supreme Soul, Supreme Father. And peace is our true religion. And we have this concept of one God, one word, one family. And it's very same, it's similar to what this project YugParivartan says. And when we talk about golden age, at present we are in the Kali Yuga, and now we are in the confluence age. This is the junction between the two ages, golden age and the iron age. And from iron age, we are transforming into golden age. How this will take place? What is golden age? And as you know that in the iron age, everyone is having problems.
They have diseases of mind and body. Everyone is suffering. Everyone is having poverty. We have spoiled the nature. Everyone feels insecure. And in the golden age, everyone is healthy always. It's a age without doctors, without hospitals, and everyone is rich. Their nature is Sato Pradhan, and there are no jails, no courts, no police. So we have to transform from this age, Kali Yuga, to golden age. So this is what golden age looks like, where science is fully refined, super refined. You have Pushpak Vimans, which are accident free. Nature is at full bloom. What our Dr. Arun Joshi was saying, that now nature is tried, there's nothing left in the nature. We are using chemicals. But here nature and all the plants and the animals, like you can see, lion and the cow, they are having the water, at the same place. So there's full of non-violence. So we are moving towards that nature, and human beings which are Sato Pradhan, full of divine values. There is no animosity whatsoever. There is no ansh of any vices. So we are how to go about it. So Brahma Kumaris and GHRC, the Global Hospital Research Center, where I'm associated for last 26 years as a director of cardiac and medical services. And this vision is ever healthy, ever wealthy, ever happy human beings and the whole world. So this is what we are looking for. So I'll be sharing you with my vision, what I have been working as a cardiologist for last 26 years, and more so for last 24 years, in collaboration with DRDO and Ministry of Health, Government of India. And this is we are working on this healing the heart. So this is a program called Three-Dimensional Healthcare Lifestyle for healthy heart, happy mind, and healthy body. In this project, this is my hospital, which is in the Mount Abu. It's a very nice hospital, a multi-specialty hospital, tertiary care hospital. And here we have another hospital, the Global Hospital and Trauma Center, which is where also I am working. I'm associated with both the hospitals and looking after the services. And why I'm talking about three-dimensional healthcare? When we have state-of-art modern healthcare available, we have topmost facilities available all over the world, and India is not far behind. We are at par with US, UK, and all Western countries. Rather, sometimes we are better than them in certain areas. So, what modern healthcare is? Why, in spite of having modern healthcare, we are having a lot of problems. Like you have in COVID times, we know how the modern healthcare has failed us. So modern healthcare is only because modern healthcare is only one-dimensional. It addresses only one aspect of human being, that is the body. All the medical schools in India and the world teach only about body and no teaching about mind and spirituality. That is the problem in modern healthcare. You take the WHO definition of health. Health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual. This is the first definition given after the formation of UNO and WHO. There is 4 aspects of health, 4 pillars of health: physical health, that is body health; mental health; psychological health; social health; and spiritual health, and not just the absence of disease or infirmity. That is the definition of health. And this very WHO in 1977 at Alma-Ata, that is called as Almaty today, Kazakhstan, they had planned a program, Health for All, by 2008. 2008 is over, right? Now it's 2021. And what is the status in 2021? We take this is the status of health in 2021. Physical health, the body health. According to this, 30% people are hypertensive, heart disease 14% people, diabetes 10% people, obesity 40% people, respiratory problems 10% people, acid reflux disease 35% people, bone problems 20% people. If you take all the problems together, cancer 5%, we have got 100 people suffering from 200 problems, 200 diseases of the body. That means every human being on the planet has at least average 2 diseases with him. So that is the status of modern state of art health. In spite of that, we are having so much of problems. And the mental health,
Depression, 25% population is depression. Insomnia, 20% people are having insomnia, lack of sleep. They take tablets. Anxiety, everyone has anxiety. Everyone has anger. Everyone has greed. Everyone has lust. Everyone has ego. Everyone has attachment. Laziness, fear. You know where from this word bimari has come? Bimari. B means fear. If you take the Hindi Shabdkosh, you will find the meaning of fear. Bimari. B means fear. Mari means constancy of. डर बने रहना. जब आपके डर बना हुआ है तो आपका पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा हेबाज हो जाता है, and that is how you start suffering from the disease. Cynicism, finding fault with others, hostility, that is revengeful behavior, type A behavior, always having pressure of time, pressure of work, pressure of perfection, aggression. So this is what we are suffering from. Everyone almost is suffering from this. So no one is physically healthy, no one is mentally healthy. Social health, you know, hatred, jealousy, thefts, dacoities, competitiveness, rapes and murder. This is the talk of the day. Spiritual health, identity crisis, everywhere, in every home, brothers, husband, wife, parents and children. Everybody there's identity crisis. There's ego problems, ego clashes, communal riots, terrorism in the name of religions. So what to do? And what is happiness? Happiness is not laughter. International definition of happiness, inner state of being, and it comes from inner satisfaction and contentment. Is anyone happy in this world? Happiness, because happiness comes from what? When our mind is pure, when purity of mind and intellect is there, peace, when you have internal peace, truthfulness, fearlessness, power of tolerance, easy nature, sweetness, large-heartedness, not this physical heart, large. It's the large, we call it udarta, benevolence, empathy, compassion, love, true love, sacrifice, satisfaction. This is what happiness means, and where from you will get it, how to get it. So that is the problem, that in this world at present, no one is healthy, no one is happy, neither physically healthy nor mentally healthy, and not happy also, in spite of whatever advancements we have made in this world. So today, more than 95% diseases are stress-related or psychosomatic. So if you take the heart disease per se, because I have been in this area, working in this area for last, actually I'm in this, I'm in the profession for last 41 years, and totally focusing on cardiology for last 31 years. So at present, in 2015, we had 6.2 million people suffering from heart disease, documented heart disease. And for every one heart patient, there are hidden 2 patients. So you take it about, this comes up to about 20 crore people suffering from heart disease in the country. And anyone, as I say this word, anyone who has a heart can suffer a heart attack. So you have, every one of us has a heart. So we have to protect it from the child itself. And it is not a disease of old people now. Less than 50-year people, they have 60% of people are less than 50 years old. That means it is disease, not disease of the old people now. It is a disease of young people. And more than 50% deaths are below the age of 50 years. You can see this. So about 33 lakh people die every year because of heart disease. So this just to show you some angiograms. How, because this is a disease where you require same patient repeated 2007 angioplasty, 2010 angioplasty, 2014 bypass done, and after that bypass, again after 2 months of bypass, again symptoms come. Patient goes to USA. He gets all the grafts are blocked. He gets angioplasty done to all the 3 grafts which are there, and still after 4 months he develops problems. So that is how, this is how all the grafts are blocked. And see, this is what is happening. This is where, when I was working in one of the premier heart hospitals in Delhi, I found we used to do angioplasty. We put the stents, and after 3-4 months, patient will come back and say, "Doctor, I have a problem." So we repeat the angiogram. Either stent is blocked or some new blocks have appeared. So we say, "Okay, we have to do another angioplasty." Patient will tell me, "Doctor, last time I had to sell my house to get angioplasty done. So what should I do now? What should I sell now? You are asking to deposit 2 lakh rupees to 2.5 lakh rupees or 3 lakh rupees in the hospital. From where I will get it?"
That is what stimulated me to go for this research. And similarly, this patient who is not hypertensive, not diabetic, who is not a smoker, not normal weight person, he gets angioplasty done 2013, 14, 15, and then and it goes on. Angioplasty and bypass done within 3 years and still not relieved. So this another patient, and another industrialist, 44 years. He's got hypertension, diabetes, and also all the three arteries are diffusely diseased. It cannot be operated. It cannot be angioplasty. Similarly, this patient, this is a lady, she's an NGO, director of NGO, and she had 8, 9 angioplasties done in last 11 years. You can say this. And still not, and also bypass, one bypass done, still not relieved. So then she comes to us. So how to address this? You can all the stents done, and the bypass also gets blocked. Similarly, you see this patient. He's got multiple blocks, seven angioplasties done, still not relieved. So basically, whatever we are doing, angioplasty, stenting, medicated stent, bypass surgeries, they're all palliative, does not address the root cause. Root cause is disease, mental stress, and the diet, exercise, wrong diet, wrong exercise, wrong sleep, wrong tobacco use, etc. The treatment which we are offering is only one dimensional, addresses only body. We know that heart disease is psychosomatic disease, a lifestyle disease. Because it is why I'm talking about heart disease, it's the number one killer. It's a silent killer. It kills more than 30% of deaths all over the world. In India, including in India, are because of heart health. And this is totally preventable disease. It can be totally serious. Another patient from US, he had this multiple blocks, angioplasty is done multiple times, and see this, all the stents are blocked, again blocked, bypass blocked, and now he's just 47-year-old person, and where to go at this age? Till a thin person, the bypass is also blocked. So what to do? So such problems. So I'm not going into this because there's no time. Angioplasties and bypass do not address the root cause, because angioplasties and stents do not prolong life or even prevent heart attacks in stable patients. I have done all this, but after working into this area for a long time, then I found the futility of, because bypass and surgery, primary angioplasty is good, but wherever you see a block, you put a stent, that's not good. Bypass surgeries also do not address the root cause. But if you change the lifestyle of a person, it reverses not only the heart disease, but also almost every chronic disease of the body. In this inter-heart study, the milestone study, more than 30,000 people from the 52 countries, and they saw that if you change the lifestyle, you could prevent at least 90% of all the heart disease. And what we have, this study where Nobel Prize was given in 2009, they have shown that if you do meditation, regular meditation, diet, and lifestyle modification, then actually you can change gene expression, hundreds of genes in a few months, in just 3 months, period of 3 months. Genes associated with CAD, cancer, obesity, hypertension, rheumatoid, SLE, were turned off, and genes, positive genes, protective genes were turned on by following meditation, diet, and lifestyle. When I say lifestyle, you are following your biological clock. There's a biological clock in your hypothalamus. If you follow a biological clock, go to bed at right time. There's a time to sleep, time to get up, time for meditation, time for walk, time for breakfast, time for lunch, time for dinner, time for planning, time for working. Follow your clock, and you will see that everything goes as per the proper way. So I'll just show you a few results of my study, which I have done for the last 24 years. This is a practical model of healing the heart, or healthy heart, happy mind, and healthy body. And this is a study which we conducted in collaboration with DRDO, Defense Institute of Physiology and Health Sciences, and under Dr. APJ Abdul Kalam and our former president, and different tertiary care hospitals from Mumbai, Ahmedabad, and New Delhi. This is my alma mater, Maulana Azad Medical College. And this study was sponsored by Ministry of Health and Family Welfare. And this study was published in 2011. And this study was found to be, we call it Mount Abu Open Heart Trial. And this study was for 2.5 years. It remained #1 in top 20 studies all over the world in the field of cardiology. This is #1. Continued for 2.5 years, till from July 9, 2013 to November 2015.
It was number one. And then it was included in the American Heart Association scientific statement in 2017, meditation and cardiovascular risk reduction. And they said that this is the meditation, Raj Yoga meditation, this Gupta SK et al. In Indian Heart Journal 2011, that this can be effective module to look after the heart disease and also risk factors of heart disease, hypertension, diabetes, smoking, and other factors can be used as a. So basically, it is what is mind? Mind has got four aspects. We call it team: thoughts, emotions, attitudes, and memories. When you have negative team, what happens? Hypothalamus, this control room of both the higher brains, right and left high brain. You make neuropeptides in the hypothalamus, and they travel from the brain, from the hypothalamus, to all the cells of the body which have receptors, and then the sympathetic activity increases, and the stress hormones come out. Epinephrine, norepinephrine, cortisol, it comes out, and then you have fight or flight response, feeling of dis-ease, sadness, lack of energy. On the other hand, if you have positive team, positive thoughts, positive emotions, positive attitudes, positive memories, then cells of the brain and body, they come out with endorphins and enkephalins, and you have parasympathetic activity, there's a relaxation response, and feeling of well-being, happiness, health, and feeling of energy. And this is what is happening throughout the day. We are creating these negative thoughts, negative emotion, negative attitude, negative memories. And that is how these things are happening. And our 8 organ systems, we are getting diseases in those organ systems. Right? You can see this. If you have a heart, then you're causing increased bad cholesterol, decreased good cholesterol, hypertension, you're getting blocks. If you have lungs, it is causing asthma. If it is immune system, it is causing rheumatoid arthritis or cancer. If it is the brain, then it's causing psychiatric problems. Digestive system, you are causing constipation or diarrhea or IBS or ulcerative colitis. In the endocrine system, causing thyroid problem or diabetes. In the musculoskeletal system, it should be causing bone and joint problems. Excretory system, you're causing kidney problems. So this is how you're creating different problems in the body. So I'm not going into details of this because this takes time. This higher brain, this is lower brain, how this system is playing its part. We also call it soul, mind, body medicine. And this is our, just to show you, this is our heart. These are 3 coronary arteries. Normal arteries looks like that, and this is the blocked artery. When the artery gets blocked, this looks like that. And this is normal artery is elastic. In childhood, they're elastic, because in adulthood, because of stress and hypertension, diabetes, wrong diet, wrong exercise, wrong sleeping patterns, we do not follow up our biological clock, smoking, alcohol, obesity, these LDL deposits in our arteries, and the arteries become like plastic. When there's a stress, physical or mental, they do not dilate. Demand increases, but supply does not increase. Here, demand increases, supply also increases. So there's no problem. But this is called angina. When 70% block is there, we just start having angina. And when we continuously have fear, anger, anxiety, depression, then what happens? This shoulder of the plaque cracks and this clot formation. The sudden 100% blockage leads to heart attack. Just to give you this knowledge. And normally from childhood, 5 years old onwards, our arteries start blocking, cholesterol starts depositing. Slowly it keeps on increasing. When it becomes 70%, then we start having symptoms. Then we put a stent, put a balloon, guide, fire, and then stent, and then leave the stent there. This is called an angioplasty. This is called a medicated stent. And when this stents also block the grafts, the bypass surgery. So this bypass surgery or angioplasty is like cutting a tree from above. And then tree again starts because the root is still there and it has a palliative effect. And that's why we have to go for repeat bypass and angioplasty. So we did this research was a multidisciplinary research in which cardiologists, endocrinologists, clinicians, spiritualists, nutritionists, fitness experts, psychologists, and physiologists. We have worked hand in hand we are working for last 24 years. And what is this program? We call it 3-dimensional healthcare program. When I say 3-dimensional, means spiritual, mental, and physical. We are addressing all the 3 aspects of human being. This Mount Abu open heart trial has been published. Abu Healthy Heart trial is in the publication. It's a randomized control trial. And the difference between two groups is almost, it is the same except for stress management through meditation. Test diet is same, exercise is same, medication is same. And we repeated the angiograms after 12 months. 80% of our patients had
had severe disease, that is double vessel disease or triple vessel. And all these study parameters were all blinded, and the even angiograms were also blinded, coded, so that there's no sort of bias in analysis. So you can see this patient who could not walk even 500 meters, they started walking 3 kilometers within 5 days, 7 days. And all the drugs were also decreased significantly. Nitrates, antihypertensive, antidiabetics, insulins were decreased significantly. Exercise tolerance increased by 500%, almost 40%. And the heart pumping increased by 10%. And the bad cholesterol decreased by 31%. Good cholesterol improved by 16%. While all these statins, what they do, they decrease both LD, bad cholesterol and good cholesterol both. But here, this lifestyle measurement improvement, or we call it three-dimensional health, meditative healthcare lifestyle, that decreases your bad cholesterol, improves your good cholesterol, decreases your bad cholesterol. And 93% patients could open their blocks. I'll just show you some of the angiograms. See this, how beautifully it has opened. See, this long block cannot be angioplastic. See this beautifully it has opened. Can you appreciate this? Even 100% block. We had 50 blocks which are calcified block, 100% blocks. They opened. This 100% block opened up. We were not sure they will open up, so we did not include them in the study. But to our surprise, out of 50 blocks, calcified blocks, 29 blocks opened. And see this, all the blocks have opened. 90 and 188, 90 and 80% blocks have opened. And this patient had 2 heart attacks. Ejection fraction, the pumping power of heart, which normally is 50%, became 30%. And after in the repeat angiogram after 1 year, it became 45%. So this is from 80%. It became the block has opened. Doctor साहब, Yes, sir. बहुत ज़्यादा technical जा रहा है. इसके लिए we will have another day. थोड़े से सवाल होंगे आपके लिए. I think that would be more apt. Yeah, I'll be there in the panel. I'll be there in the panel. 20% injection for heart pumping has increased to improved to 50%. That means which stem cell therapy cannot do it, but with this meditation you can do it. 100% block has opened. So control group, there were other blocks increased. So that is what I want to show you, that if you approach meditation, you change your lifestyle, this 100% block, see this block, 100% block, calcified block has opened up. You can see this. So this is a disease which affects almost every person. 15% of the population is having these blocks. Number 1 killer in the world. And all the psychological parameters, type A behavior, anxiety, depression, anger, these all are addressed, all significantly decreased. And patients could leave smoking and alcohol. And the EEG, alpha rhythm improved, beta rhythm decreased, theta rhythm, loveful rhythm improved, and delta rhythm, happy and blissful rhythm improved. And what I was telling you, see this alpha rhythm improving over 2 years, beta rhythm decreasing, theta is increasing, delta is increasing. So if one person enjoys very good sleep. And the sympathetic activity, which I was telling you in that slide, sympathetic activity, day 1 it was so much, decreased by 7 days, and parasympathetic relaxation response improved. And after 1 year, both are balanced, harmonized, and remain harmonized after 2 years. So this is what is happening, that you need you have challenges in life, but you address them beautifully when you sort of start following a change in lifestyle. So this is all the hormones, the stress hormones decreased by even on day 7, and the happy hormones, serotonin, endorphins, they increased on the day 7 itself. So that now endorphins, you will not have pain, you will feel easy, you will feel healthy, you will lead a pain-free life. And all the cortisol hormones, which are responsible for stress, on day 7 itself they decrease, and further decrease as you follow the program. So, and the insulin sensitivity, diabetes is a big problem. We were able to get rid of insulin from the treatment. People who are on 50 units of insulin, 90 units of insulin. Within a day, within a week, we were able to get rid of insulin. And because the cortisol level decreased, so the insulin became effective. Patient stopped having insulin resistance. So this is what is happening. So this basic thing is, I'm just coming to this point,
that basically today everyone is under stress, and the stress is called pressures divided by coping ability. When this ratio increases more than 1, then you feel stress. And coping ability can be increased by meditation. And what is meditation? And there's no medication in the universe which can increase, which can improve your coping ability or inner strength. And the only treatment is yoga or meditation. And what is yoga? Yoga meditation means connection. Connection with what? Connection with the truth. What is the truth? Truth is eternal, beyond birth and death. Truth is unchangeable. It always remains the same. What is the truth of human being? And this is the truth of human being. One aspect is body, outer self, soil, and other aspect is being, the soul, inner self. Once you are outer self conscious, then all the vices will come because it is unstable, insecurity, all the negative tendencies will come in. Then you have stress, you have to go for wrong food, wrong exercise, wrong sleep, wrong addictions, smoking and alcohol. And that is what leads to disease. This is loss of peace. B, fear, Marik, then you undergo fear. And that is what leads to all the problems in the mind and body. On the other hand, if you become inner self-conscious, because soul, you become stable, full of security, then all the 7 innate qualities of the soul, they will start manifesting in your life. And then when you have these 7 innate energies in the consciousness, then when you come in action, then you have all the values in manifest in your practical life, in your conduct. And then you are stress-free. You go for proper food. These people are looking for happiness in the food. These people are already happy. So they go for proper food, healthy food, proper exercise, proper sleep. And they say no to smoking and alcohol. And this is how they lead healthy and happy life. Incurable does not mean it is not curable. It means it is in plus curable. It is curable if we go in. So if we go in. So basic thing is, my aim of creating golden age, YugParivartan, is self-responsibility. We are making our people responsible for their own health. Healthy means heal plus die. Heal yourself. You are responsible for your own health. There is only one person on the planet who can heal you. That is you. Doctors can guide you. Your relatives can help you. God can help you 1,000 times. But first step is yours. The second is self-awareness. Healthy means swast. Swa means inner self or soul. Sta means conscious. So healthy means soul conscious. Swa. Swast means soul conscious. So twinkle, twinkle, little star. Now I know who I am. Up above the world so high, like a diamond above the sky. So that is what soul and supreme soul are all about. So we have a multidimensional approach. True knowledge comes from God, and God is truth. And we know we have the right knowledge of soul, mind, body as per biological clock. By enjoying the harmony in all the 3, I just come to this slide, last slide. This is what? Soul, 7 energies, and the soul nourishes the body, all the 80,000 billion cells of the body, through mind, that is memories, thoughts, emotions, memories. Our team becomes negative, then the energy does not flow to the body cells. And we have 8 organ systems. All the cells of the body, they require all the 7 energies, but one energy is very special to each system. Like for the brain, it is the knowledge. Knowledge is the truth. Purity for the 5 sense organs, the immune system. Peace for the lungs. Love for the heart. Happiness for the digestive system. Bliss for the hormones. Powers for muscles and bones and joints. And all the 7 organs, all the 7 energies combined to release toxins from the body. And this is blocked. This one. I just I'll be just finishing in one. Okay. Thanks a lot, I think Dr. Satish Kumar Gupta ji. I'm just finishing. In just 1 minute, I'll say. Now we have more than 10,000 patients in our program, and these 10,000 Dilwalas, we call them Dilwalas, they have gone around the world and they have spread this information message there. Everyone has done this awareness in the community. We have gone to the different parts of the country, taken awareness campaigns with the different people, creating this awareness all over the world, that this is where, if we apply this system, and this is what the main project of Brahma Kumaris in creating, we call it Swasth Bharat.
Mera Bharat, Swasth Bharat. This is what we are creating, that this awareness all over the world, that especially all over the India, that how through this three-dimensional healthcare system, spiritual, mental, and physical, we can create ever healthy and ever happy world. Om Shanti. I'm very thankful to all of you. Thank you. Thanks a lot, Satish Kumar Gupta ji. And as mentioned in Bhagavad Gita also, Yuktahar Viharasya, Yukta Chetasya Karmasu, Yukta Swapna Bodhasya, Yogo Bhavati Dukha. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. So since ages, India is aware of this wisdom, and now it is appearing again into the lives of people through the organizations like Brahma Kumaris, YugParivartan, Art of Living, Patanjali Yogpit, and several other institutions working to bring health and happiness into the lives of people. So with this, I invite my colleague Praveen Mehra ji to give a vote of thanks to Dr. Satish Kumar Gupta ji and invite our next speaker. Thank you, Guruji. India is becoming the modern healthcare capital of the world, thanks to great minds like yourself, Dr. Gupta. We feel so proud today. Thank you, especially because today we understand what the world is going through in this pandemic times. And I know how much we had to, push you to take time out of your schedule to be with us. We appreciate each and every moment that you've spent with us. आपकी आवाज में डॉक्टर साहब एक दर्द का एहसास था। प्रत्येक इंसान बीमारियों से ग्रस्त किसी को भी मायूस कर दे। इस स्थिति को बदलना पीवाईपी के कार्यक्षेत्र का एक अहम हिस्सा है और इसी के लिए हमने आपको आमंत्रित किया कि आइए जुड़िए और हम मिलके इस स्थिति को बदलें और सबको एक स्वस्थ जीवन देने का हम जो प्रयास है उसमें सफल हों। Thank you so much for being with us today. My life is now for this one. Thank you so much, sir. Helping of people. Okay, now over to the next speaker for the day, Acharya Prem Bhatia ji. He is the founder of YugParivartan Yoga Sansthan. What happens to you when you, by the hand of fate, very early in your life, are laid down to bed rest due to a bad back? And you have to undergo a surgery, and 1.5 years of your life is lost because of your bad health. I don't know what you would do, but what Acharya Prem Bhatia ji did was, it set him thinking. The human inside him awakened, and he wanted to make sure that his plight was not faced by any other human being. So it took him a while as he was even recouping, and he searched for a whole lot of exercises and yoga because yoga was in the family. His physio had once prescribed certain exercises on his recovery path, which Prem Bhatia ji discontinued for whatever reasons. The result was he saw the relapse of his pre-surgery pain and in a more serious version. So this made him realize the importance of regular physical exercise. So he discovered this yoga routine. I think the quest for giving humanity a relief was what supported him in his endeavor. And the routine he developed for about 45 minutes could be taken by people of age 10 to age 90, and the results were magical. He tried it on himself, on family, and then he prescribed to all, and everybody had a good word. What followed after that was a selfless and dedicated service to mankind through innumerable shivers and camps in educational institutions, spiritual and religious congregations, and very soon one center came up for Bhatia ji in 1991, the YugParivartan Yoga Sansthan. Any kind of ache, any kind of ailment, any kind of disease, Dr. Acharya Bhatia ji had a relief for the person in pain. And is it a coincidence that this was the same time that Baba Ramdev was also embarking upon his yoga revolution? Bhatia ji was assisted in his noble humanitarian work by his wife and both daughters,
and the family did it all for free, just to give some relief and some succor to mankind. Bhatiaji, drawn by his call of seva, wound up his business and his activities, dedicated himself to creating scores and hundreds, to give relief to scores of hundreds of people, relieve them of their pain. A multifaceted personality, Bhatiaji has penned several books and poems. Yog, ek sahaj sadhan, Yog, an easy approach. जाने जिंदगी, आईना ए हकीकत, आओ खुशी के दीप जलाएं, are some of his creations. He is also a shyer at heart. Acharya Bhatia has been recognized by several awards and recognitions, but he says the biggest award has been the smiles that he has put on people's faces. We invite this embodiment of love and compassion to address us on what he sees as his vision for the golden age. Over to Acharya Prem Bhatia ji. Hello. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. Slightly faint. थोड़ा सा एक बार और बोलेंगे. हेलो. आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो आ रहा है. या तो आप वीडियो ऑफ करके बोल लीजिए. हाँ जी. कैमरा ऑफ करके बोल लीजिए. ऑफ कर दें? हाँ, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है, तो आप बिना कैमरा के बोल लीजिए. हाँ जी. ये ठीक है अभी? Am I audible? हाँ जी, वॉइस ऑडिबल है. आप कंटिन्यू कीजिए. ठीक है, फाइन जी. तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन से परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं सभी लोग, और उन सब स्पीकर्स को भी जो आकर के अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं. तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बिंदु रखूंगा, और अच्छी बात ये रही कि जब मैं अपनी आजीविका को उपार्जन करने के लिए शुरू किया, आई वाज इन बॉम्बे, तो मुझे ये नहीं लगता था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में. मुझे लगता था कि मुझे अपने आप को मुट्ठी में करना है. मैं चाहता था कि मैं अपने आप को बेहतर कर पाऊं, अच्छा कर पाऊं, स्वस्थ जीवन जी पाऊं, परिवार के लिए थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, और उसके बाद मैं पूरा समय अच्छा समझने में लगाऊं, ताकि मैं सोसाइटी को वापस कर सकूं वो कुछ सब कुछ जो मुझे सोसाइटी से मिला है, जो मुझे देश से मिला है, जो मुझे विरासत में मिला है. इसी सोच को लेकर के बड़ी मेहनत से, बड़ी मेहनत से काम शुरू किया. मुझे लगा कि जिंदगी के काफी महत्वपूर्ण साल निकलते जा रहे हैं. 1988 और मैं और समय देना चाहता था कुछ और अच्छा सोचने समझने के लिए. जैसे भाटिया जी, आपकी ना लो बैंडविड्थ आ रही है, तो आपका मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा बैंडविड्थ ठीक हो जाएगी. ना ठीक आ जाएगी. फाइन है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं. हाँ जी, वीडियो बंद कर दिया. अब आप बोलिए.
मच, फाइन। तो ठीक है। तो मैंने जो शुरू किया, मैंने देखा कि जिंदगी बड़ी नया, हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सामान नहीं चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं नहीं चाहिए, कुछ समय चाहिए और कुछ ईमानदारी से उसको सोचना चाहिए। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती रही और यही सोच करके मैंने योगाभ्यास का डिप्लोमा वगैरह कर लिया पहले अपने जॉब से छूटते ही। और उसके बाद मुझे लगा कि यस, योगाभ्यास का जो तरीका जनरली बताया जाता है वो थोड़ा सा मुझे कंप्लीट सा नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि काफी सारे कठिन आसन बताना या उसको बहुत ही फॉर्मल वे से कराना मुझे शायद कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए जो मेरी रिसर्च थी वो काम आई मुझे। तो इन 3 in 1 हमने कुछ जो डेवलपमेंट किया वो 3 in 1 किया। पहला, अपनी शरीर की मांसपेशियों पर काम करना, इसे हम कहते हैं कार्य शक्ति, फिजिकल बॉडी की कार्य उस पे मांसपेशियों पे काम करना। दूसरा है प्राण शक्ति, कि हम इनहेल करके सांस को रोक करके जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोक करके उसके ऊपर काम करते थे। तीसरा है ध्यान शक्ति, तो हम ध्यान दे करके जहां पर काम कर रहे हैं ध्यान वहीं पर रख करके हम काम करने लगे। तो इन तीनों का जो त्रिवेणी का जो सिस्टम बना, जो त्रिवेणी का जो इफेक्ट बना, दैट वाज समथिंग मार्वलस। हमने देखा कि काफी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे और हमको यही कहते थे कि आप धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए और जितना हो सकता है उतना कीजिए। बिकॉज हमारा विजन यही था कि 10 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक कोई भी आदमी कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, उसको उससे फायदा होना चाहिए। कम ज्यादा उसको फायदा होकर के और बेहतर हो सकता है वो, ऐसा हमारी सोच थी। और इट वाज प्रूव्ड, बिकॉज मेरी बेटी 10 साल की थी जब वो टीचर बन गई थी, योगा टीचर, और 100 लोगों को कराती थी अभ्यास। और मेरी माता जी, पूज्य माता जी, शी expired when she was 99 plus 12 days, and up to 98 years she was doing abhyas very comfortably. 98 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बड़े अच्छे से अभ्यास किया। So that was the beauty which probably we could think कि yes, यही तो हम चाह रहे थे। तो उसमें क्या छोटा क्या बड़ा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, हमारे मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, हमारे गुरुद्वारों में भी, हमारे कहाँ का कैंप्स। और उसके बाद मेडिकल फर्टिलिटी में हम बहुत ले गए इसको। बहुत सारे डॉक्टर्स से मिले, बहुत सारे डॉक्टर्स को तकलीफ थी और उनको योगाभ्यास कराया और उनको बहुत अच्छा लगा। इससे क्या हुआ कि वो भी हमारे बड़े अच्छे मित्र बन गए। और वो कहते थे कि लोग तो योगाभ्यास करके और ठीक से ना करके हम बीमार होके आते हैं, पहली बार ऐसा हो गया कि हमारे पेशेंट भी आपके पास जा रहे हैं। इवन द पीपल हु आर जस्ट गेटिंग नीड टू बी ऑपरेटेड, उनको टाइम मिल गया था काफी दिन मेडिकेशन लेने के बाद, जब उनको ऑपरेशन करने की नौबत आ रही थी तो वो हमारे पास आ गए किसी से सुन के पूछ के, और वो विद इन नो टाइम, विद इन 4 to 5 weeks वो इतने कंफर्टेबल हो गए कि डॉक्टर ने कहा कि यू डोंट रिक्वायर ऑपरेशन। तो दैट वाज अ ग्रेट, आई मीन, सेटिस्फेक्शन टू ऑल ऑफ अस कि हम जो कुछ कर रहे हैं कितना अच्छा हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, पूरे परिवार का सहयोग मिला। और इससे ये हुआ कि 10 वर्ष जब तक हो गए हमारे संस्थान को, अराउंड 2000 में 1999 में हमने एक कोर्स डेवलप किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हुआ और योगा सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में 6 month कोर्स बना। और वो एज ए योगा ट्रेनर हुए एंड थाउजेंड ट्रेनर्स वर मेड। और हमारी ये खुशकिस्मती रही कि वो कोर्स हमने हमारा ही कोर्स डेवलप होकर आगे बढ़ा और काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और बहुत लोगों ने इसको अभ्यास किया और बहुत फायदा उठाया। और देश के विदेश के कई जगह पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके काम कर रहे हैं। हमें खुशी की बात ये थी कि जैसे हमें पैसे का संग्रह का कोई इशू नहीं था, लेकिन हमें बताया ये गया था कि जितनी फीस आप ज्यादा लेंगे, जितना पैसा आप ज्यादा लेंगे, उतना आपका नाम बढ़ेगा। और इस बात को आप याद रखना। तो मैंने याद तो रखा, लेकिन इस बात को नहीं रखा, उल्टी बात को रखा कि हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे। अपने घर का
मेहनत से चलाएंगे और ये जो पैसा है इस पैसे का हम यूज करेंगे खूब सारा और प्रचार प्रसार करने के लिए करेंगे। जैसे कोई किसी की आस्था किसी मंदिर में होती है तो वहां जाके दान देता है, हमारी आस्था योग में थी और योग से हमें जीवन नया जीवन मिला था, योग से ही हम सबको फायदा पहुंचा पा रहे थे। तो जो कुछ भी दान करने का मन होता था तो हम इसी में चुपचाप डाल देते थे। तो कितने वर्षों तक लगातार चुके हैं हमारे संस्था को। हमने आज तक न कभी सब चीजें बड़ी सहज रूप से हो जाती हैं और जो जो थोड़ा थोड़ा व्यवस्था होती है वो सारा प्रचार प्रसार में हो। तो इस से हम अपने आप को बहुत लकी महसूस करते रहे। लोभ लालच हमें कोई ज्यादा झंझट नहीं हुआ, काफी दूर में लोग होके गए। भाटिया जी, आपका इंटरनेट शायद फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार राउटर के क्लोजर आके अगर आप बोल सकते हैं तो। प्रवीण जी, भाटिया जी का लगता है ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, अभी ठीक है जी? यस यस, अब यू आर बैक, थैंक यू जी, थैंक यू। तो उससे हुआ क्या कि अपने मन में अतृप्ति थी कि यार अपने को तो कुछ तृप्ति नहीं हुई है, अपने को अंदर से शांति तो नहीं हुई है, अपने अंदर तो आचरण निश्चित नहीं हुआ है। ये बहुत पीड़ा मन में थी, बहुत सारे प्रश्न भी थे कि ठीक है पूरे परिवार सहित हम 15 वर्ष तक लगे रहे हैं, बहुत सारा कार्यक्रम हो गया, बहुत सारे शिविर हो गए, लेकिन अपनी तृप्ति भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है। तो ये लेकर के मैं काफी सोचने लग गया और मैं कई कई साधु सन्यासियों, कई विचारकों, विद्वानों से मिलता रहता था। और मैंने उसे जब एक बार गया किसी कार्यक्रम में तो एक बड़े अच्छे विद्वान थे, ही वाज वाइस चांसलर ऑफ सम यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बड़े अच्छे से रामायण में ये है बताया, महाभारत में ये बताया, उपनिषद में ये है बताया, गीता में है ये बताया, ये सारी चीजों को सम्मिश्रण करके बड़ा शानदार तरीके से करीब 1.5 घंटे का लेक्चर दिया। और आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड लाइक एनीथिंग। मैं कि वाह क्या कितने विद्वता है, कितने विद्वान आदमी हैं। और जब बाद में लंच के बाद मैं उनसे मिला और मैंने कहा, प्रार्थना की, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिएगा, आपने बड़ा सुंदर तरीके से बताया कि उपनिषद क्या कहता है, रामायण क्या कहती है, महाभारत क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, है ना। तो ये सब बताया आपने, लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ आप क्या कहते हैं, आपके दिल में क्या है। तो उनका जवाब सुन करके मैं उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। कहने लगे, प्रेम जी अपनी न पूछो, हमारी न पूछो, ये तो मैंने बताया, पढ़ के बताया, समझ के बताया, समझा दिया, लेकिन अपनी मत पूछो। तो मेरी प्यास और बढ़ गई कि यदि इतना विद्वान आदमी भी, इतना पढ़ा लिखा और इतने स्थिति पाया हुआ भी आदमी यदि अपने अंदर खोखला है या अपने अंदर सेटल नहीं है, तो मैं तो कुछ भी पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी समझा ज्यादा नहीं हूँ। और मैंने ये देखा, एक सन्यासी थे काफी वयोवृद्ध, मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि करीब 5 से 7 साल चाहिए, आप मौन शांत होकर के साधना करेंगे तो फिर आपको कुछ सत्य की प्राप्ति होगी, आपको शांति होगी, आपको तृप्ति होगी, और आप बड़े उपयुक्त व्यक्ति हैं उसके लिए, आप आइए। लेकिन मैं सोचने लग गया कि जिस परिवार ने, जिस मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने इतना सहयोग दिया है, भाई बंधुओं ने इतना सहयोग दिया है मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए कि मैं योग को प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, अब मैं उनको छोड़ करके 5-7 साल तक कैसे जा सकता हूँ, उनकी देखरेख कौन करेगा। तो ये द्वंद था मेरे अंदर। मेरे जीवन का लक्ष्य तृप्ति प्राप्त करना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे परिवार भी तो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, मैं उनको कैसे छोड़ दूं। तो मैं बड़े द्वंद में था। और उन दिनों के अंदर एक हमारे मित्र जो कल स्पीकर के रूप में भी आ रहे हैं,
सत्य प्रकाश जी भारत, उन्होंने मुझे कहा कि एक जगह कार्यक्रम होने वाला है बहुत सुंदर, आप वहां पर योगाभ्यास के लिए चलेंगे? आप कृपया चलें तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं वहां पर योगाभ्यास करने के लिए मैंने हाँ कर दी। और वहां पर जाके देखा कि करीब 100 लोग आए हुए थे, पूरे देश के बहुत ही विभिन्न शिक्षाविद, समाज सेवी और बहुत गिने चुने लोग, शानदार 100 पीपल ऑल ओवर कंट्री। और मुझे उन्होंने कहा कि आप भी बैठ जाइए, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जितने भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं बातें ज्यादा करते हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आती है, तो वो बाल का खाल निकालते रहते हैं और मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार थोड़ा सा बैठ के देख लीजिएगा। और मैं जब बैठा और मैंने देखा, उसके जो प्रबोधक थे वो थे श्री गणेश बागड़िया जी, IIT के प्रोफेसर थे कानपुर के। और जब उन्होंने शुरू किया, लिख दिया बोर्ड पर कि 7 दिन में हमारा ये एजेंडा रहेगा, ये डिस्कशन होगा, पहले लिखा कि मानव क्या है, मानव क्यों है, परिवार क्या है, परिवार क्यों है, समाज क्या है, समाज क्यों है, संसार क्या है, संसार क्यों है। हे भगवान, मुझे लगा कि मेरी कुछ सुन ली गई, अरदास सुन ली गई है। मैं इतना तड़प रहा था कि मुझे कुछ समझाए, मुझे कुछ बताए कि वाकई सच्चाई क्या है, ईश्वर है, ये कैसे रहता है, कहाँ रहता है, कैसे करता है। हितेश जी, जैसे आपके मन में उधेड़बुन हुई कि भगवान कृष्ण कह तो गए थे कि धर्म की गिलानी नहीं हुई क्या, ये आप कब आओगे, हमारी कुछ कमी है और हमने देखना है कुछ। मैं भी ये सोच रहता था शुरू से ही कि ये क्या होगा, यदि ईश्वर के पास सारी ताकतें हैं तो ये क्यों नहीं करते उपचार, इतनी सारी प्रॉब्लम, जितना आतंकवाद, इतना भुखमरी, इतनी बीमारियां, ये क्या हो रहा है, ईश्वर क्यों नहीं करता है। मेरे प्रश्न बड़े वो थे, बड़े मुझे डसते थे। तो मित्रों, वो 7 दिन 18 जून 2006 तो 25 जून 2006, ये 7 दिन मेरी जिंदगी इतना खुशनुमा कहीं मुड़कर देखा नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं कभी। क्या कमाल की तृप्ति मिली, क्या कमाल की अंडरस्टैंडिंग मिली, क्या कमाल मिले, क्या कमाल का समाधान मिला। अपने आप को जाना है और प्रकृति विधि से जाना है तो प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा। करना पड़ेगा अपने जीवन में, तब जाकर के कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, तब जाकर के कुछ चीजें आएंगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको कि मैं चाहता था कि दुनिया कर लो मुट्ठी में नहीं, खुद को कर लो मुट्ठी में, इससे दुनिया बदलेगी। और वाकई इससे दुनिया बदल गई, इससे दुनिया पूरी बदल गई। तो मुझे कितना कुछ समझ आया इस 15 वर्षों में। जैसे हितेश जी कह रहे थे ना कि मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, आपने तो कमर कसी हुई है और आपने तो आगे टाइम भी आगे निश्चित कर दिया, 4 जून 2025 ये पूरा कार्यक्रम हो जाना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक पल बहुत ही कीमती है। जो उन्होंने अनुसंधान किया है, नया अनुसंधान हुआ है, एक नाराज की बात करें, पद्मश्री है, भाटिया जी, लगता है आपका नेटवर्क फिर प्रॉब्लम दे रहा है। मुझे लगता है CMSC हम लोग
भाटी जी से अनुमति लेके उनको 10 मिनट बाद में रख लेंगे। यदि नेक्स्ट स्पीकर को यदि बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है ऐसी लोकेशन में स्वयं जाएं जहां उनका ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी हो सकती है। थैंक यू एंड मे बी वी कैन हैव इट 10 मिनट्स लेटर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो एक बार भाटिया जी के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। उन्होंने अपनी लाइफ की इतनी इम्पोर्टेंट जो जर्नी और घटना थी, जिन्होंने उनका पूरा जीवन परिवर्तित किया, इसको कई बार हम कहते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स कभी कभार नेगेटिविटी में भी हमारे जीवन को एक दिशा दे जाते हैं, और इसका जीवंत उदाहरण जो है भाटिया जी हैं। तो हम सब ने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है, और भी बहुत से लोग जो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं उनके जीवन से सीखना है। कई बार चीज़ें किताब पढ़ के समझ में आती हैं, और कई बार चीज़ें लोगों को ऑब्जर्व करने से भी समझ में आती हैं। ऐसा दृष्टा हम सबको बनना है। और बात जब योग की आई है तो योग की एक डेफिनेशन है दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, कि दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होके जो है विश्व का दर्शन कर रहा है। सो ऐसा दर्शन करने के लिए जो सत्य का दर्शन है उसके लिए योग करना आवश्यक है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपना अपना योग पूरा करें, और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में योग के साथ साथ सहयोग भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। और इसी के साथ मैं एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहता हूं भाटिया जी को, उनकी जीवनी को। हेलो। यस प्रवीण जी, गो अहेड। भाटिया जी से मेरा भी फोन पे संपर्क हुआ। मैंने चेष्टा की कि अगर वो रिकनेक्ट हो पाए, तो शायद नहीं हो पा रहे हैं। तो भाटिया जी के स्पीच से, लेक्चर से हमें ये पता चला कि हेल्थ ओवर वेल्थ, सर्विस ओवर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, यूजिंग वंस prowess and passion to serve mankind, how one can reach out to serve thousands and lakhs when one learns to be content and keeps his own needs to minimum, expecting nothing in return. I'm sure a lot to take from Bhatia ji's life, and the applause was truly deserving. Now we move on to the next speaker for the day, another great human being, Shri Upendra Pandey ji. Our next speaker is another amazing human being, and the saga of taking accountability and delivering solution to what he saw as a growing menace all around. Founder of Polythene Donation Mission, who along with his family is working on Polythene Free Ramgarh, it's a town in Jharkhand, and Polythene Free India. We all see pollution all around us. We all see used polythene covers, packets, water bottles, milk, juice bottles strewn all across, blocking sewages, thrown into water bodies, blocking water flow in stormwater drains, plastic thrown into rivers, seas. How often we hear of fish dying of eating plastic, cows and calves eating the plastic that we throw out. We choose to do nothing about it. But here was one gentleman who thought it differently. Upendra Pandey and his family chose to give a different response. The dream they saw and expressed to each other when Modi ji won the elections in 2014. We will not ask Modi ji for anything. Rather, we will give him a gift of a polythene-free Ramgarh. Wow, amazing. Having committed to this, they began their polythene donation mission, calling people to bring their waste plastic polythene to them and in return take back a beautiful potted plant. The potted plant was gifted in a plastic container. Till date, in about 8 years, 1 lakh such plants have been so far distributed by this family, and it all began in the backyard of their home garden. Several tons of plastic that would have damaged the environment has been systematically disposed by the Pandey family. Now, this was nothing short of giving the world a lesson in segregation of waste at source 8 years ago. I think they were forerunners of this great movement. Looking to their good work, there has been support from local bodies, from local citizens,
I think they've become talk of the town, and people now take pride in bringing their plastic, used plastic, to them and taking back plants in return. Tata Steel, Jharkhand Vidhan Sabha, institutions like XLRI have opened their gates to them and have declared their own premises plastic free. The Pandays' dream of creating their own polythene donation mission park is very close to being achieved. It is the people like Pandeyji and Mrs. Pandey who have really shown us that the power of one individual. When we start looking at providing solutions rather than talking the problems all the time, there is so much that one can do. So let us put our hands together and welcome Sri Upendra Pandeyji and salute him for the great work that he's done. And I'm sure his work will lead to a polythene-free Ramgarh, polythene-free Jharkhand, and a polythene-free India someday very soon. Over to Sri Upendra Pandeyji. बहुत बहुत स्वागत पांडे जी। मैंने आपका इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में किया, लेकिन आपका जो सेवा है पर्यावरण के को सुंदर बनाने में, उसके लिए आपके आगे हम नतमस्तक हैं। ओवर टू यू। हेलो सर, क्या आवाज ठीक आ रही है? आपकी आवाज ठीक आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है? प्लीज गो अहेड। ठीक है सर। दोस्तों जोहार, जय हिंद, पॉलिथीन मुक्त विश्व और हरा भरा नमस्कार। पहले आप सभी युग परिवर्तन करने आए वक्ताओं और श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें यह मंच दिया अपने विचार को साझा करने के लिए। आप सबों का चिंतन ही आने वाले समय में युग परिवर्तन लाएगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। इसी सोच के साथ हम लोगों ने भी पॉलिथीन दान अभियान की शुरुआत की। पॉलिथीन दान अभियान, स्वच्छ समाज, नई भारत की पहचान। लव द नेचर, कीप द पॉलिथीन एंड डोनेट इट। प्राय लोग बदलाव की बातें करते हैं, पर खुद में बदलाव कोई नहीं चाहता। और जब तक हम लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन हर समय हुआ है और हर समय सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास करते रहना चाहिए। पॉलिथीन मुक्त गांव, कस्बा, शहर, प्रदेश, देश या फिर विदेश किए बिना युग परिवर्तन की परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। प्लास्टिक रोकने के लिए या फिर कम इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, एक आंदोलन की जरूरत है, खुद में उदाहरण बनने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने जमीन से जुड़े व्यक्तियों के साथ मिलकर कर दी है। अब पारी आपकी है। हम लोग जब जन्मे थे तब हमें पॉलिथीन मुक्त, प्रदूषण मुक्त गांव शहर मिला। हम चाहेंगे कि हम आने वाले पीढ़ियों को पॉलिथीन और प्रदूषण मुक्त शहर देकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। पॉलिथीन के जो आंकड़े हैं वे भयावह हैं। वह सारे आंकड़े वीडियो के माध्यम से आपको हम आगे बतलाएंगे। अक्सर सरकार और लोग बातें करते हैं सीएसआर की, कि सीएसआर के तहत सारे कार्य आसानी से हो जाएंगे। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर हमारे हिसाब से इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ बदलाव की जरूरत होनी चाहिए। हमारे हिसाब से सीएसआर का फुल फॉर्म सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है जो अपने आसपास हरा भरा बनाकर रखे, साफ सुथरा रखे, और जो प्रकृति ने लाखों वर्ष से शुद्ध रूप से हवा पानी देती आ रही है, उसे हम मनुष्य आने वाली पीढ़ी को शुद्ध समेत लौटा दें। आपने सुना होगा उग्रवादी क्षेत्र में जब हमारे वीर सैनिक, पुलिस जब गश्ती के लिए जाते हैं, तब उग्रवादी लोग
रोड में लैंड माइन्स बिछाकर विस्फोट कर देते हैं और अनेकों सैनिक पुलिस उस विस्फोट में मारे जाते हैं। उस समय हम सभी को बहुत तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए, पर आज हर एक व्यक्ति एक उग्रवादी जैसा ही व्यवहार कर रहा है। वह अपने आसपास बारूद रूपी प्लास्टिक को इधर उधर फेंकता चला जा रहा है, उसका दुरुपयोग करता चला जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सेस इज एनीथिंग इंजूरियस टू हेल्थ। अत्यधिक पॉलिथीन का इस्तेमाल मनुष्य के लिए खतरे की घंटी है। आप देखिएगा, यह प्लास्टिक रूपी बारूद एक दिन फटेगा और पूरे प्रकृति को क्षति पहुंचाएगा, पहुंचा भी रहा है। हो सकता है इसके आकलन करने के लिए हम लोग जीवित ही ना रहे। आज जिस तरह हम लोग कोरोना से भयभीत हैं, चिंतित हैं, आज का रोना यह है कि आज का रोना है। कल हो सकता है प्लास्टिक से जो बीमारी उत्पन्न हो उसका नाम कोरोना दे दिया जाए। हमें आज सजग होना पड़ेगा। युग परिवर्तन की बातें हम सभी को कर सके उसके लिए युग परिवर्तन की बातें हम सब कर सके उसके लिए हमें जीना पड़ेगा, और उस जीने के लिए हमें अपने प्रकृति को बचाकर रखना पड़ेगा। हमें गुरु नहीं, हमें विद्यार्थी बनना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा विद्यार्थी ही आने वाले समय में अच्छा गुरु बनता है। विद्यार्थी की तरह ही हमें सीखना पड़ेगा, हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हर हाल में प्रकृति को प्लास्टिक के दुरुपयोग से बचाना पड़ेगा। प्लास्टिक के सारे विकल्पों को तलाशना पड़ेगा। युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। आप देखिए, इस कोरोना काल में जो लोग गांव या फिर प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए थे, वहां कोरोना की पहुंच बहुत कम रही। लोग बिना मास्क, टीका और सैनिटाइजर के गांव में आसानी से घूमते रहे और रोग मुक्त रहे। जो लोग शहर या फिर बड़े बड़े नगर, महानगर या फिर यह कहिए जो प्रकृति से दूर थे, उसे कोरोना ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कितनों के घरों के चिरागों को बुझा दिया। ये इस बात का सूचक है कि पढ़े लिखे तथा कथित एजुकेटेड आज ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं, अपने जीवन को खोते जा रहे हैं। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल डाले हैं। पूरे दुनिया के लिए सिर्फ एक ही समीकरण बच गया है, वह है जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखेगा, अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, अपने प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करेगा, वही सारी बीमारियों से लड़ पाएगा। जिसे हम कम पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, आज के समय में वह ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। युग परिवर्तन के लिए समय के अनुरूप अपने विचारों को तब्दीली लानी है। हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। हम जिसको कम पढ़ा लिखा गरीब समझ रहे हैं, हकीकत में वही अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने प्रकृति को लेकर जमीन से जुड़े हुए हैं। प्रकृति को बचाने की शुरुआत हम लोगों ने 2013 से शुरुआत कर दी थी। आइए आपको एक वीडियो के माध्यम से ये सब बतलाते हैं कि कैसे लोगों ने अपने कार्य की शुरुआत की। मैं आप लोगों को एक वीडियो चला दूं।
धन्यवाद। It truly deserves a big round of applause. And I can, yes, and I can very much relate with it. जब मैं गुड़गांव में था तो एक पॉलीथीन फ्री गुड़गांव कैंपेन पे काम किया, और जब उसको क्रियान्वयन करके देखा तो वाकई बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। इतना आसान नहीं है लोगों के जीवन से पॉलीथीन को निकाल पाना। हमारे जीवन का एक ये अभिन्न अंग बन चुका है, सिंगल यूज प्लास्टिक और दूसरे प्लास्टिक भी, क्योंकि जीवन के हर एक पहलू पे इसने अपना जो है घेरा जमा लिया है। जब ये बनाया गया होगा इनके इजाद करने वालों ने, आविष्कार करने वालों ने, तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा अभिशाप बन सकता है एक दिन। पर उपेंद्र पांडे जी जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि जो बाकी सबको लग रहा है असंभव सा है, मुश्किल है, वो ये दिखा देते हैं कि ये संभव है। क्योंकि मनुष्य के लिए क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है अगर आत्मा से कोई चीज फील कर लियो और उसके पीछे तन मन धन जीवन पूरा लगा दें। तो उपेंद्र पांडे जी और उनके पूरे परिवार को पूरा साधुवाद और शत शत नमन कि उन्होंने ये करके दिखाया। और जैसा कि मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ उपेंद्र जी, आप भी चेक कर सकते हैं, कुछ लोग आपका संपर्क सूत्र कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं कि राज्य के एंड कंट्री के दूसरे इलाकों में भी इसको कैसे रेप्लिकेट किया जाए। क्योंकि चाहते तो हम सब हैं ये कि हर एक राज्य में से, हर एक शहर में से, बल्कि पूरे पृथ्वी पे से हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन ये हटा दें। लेकिन वो प्रयास कई बार फेल हो जाते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि सही तरीका क्या है इसको हटाने का। तो यदि किसी ने वो तरीका ढूंढ लिया है, खोज लिया है, तो उसका लाभ सभी शहरों को, नगरों को मिलना चाहिए। तो आप जरूर जिसने अपना संपर्क सूत्र छोड़ा है चैट बॉक्स पे, आप उनसे कृपया कांटेक्ट कर लीजिए और उनके राज्यों में भी, उनके शहरों में भी इसको अगर कर पाएं तो ये बहुत ही उत्तम बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, बहुत शानदार, आनंद आ गया आपकी बात को भी सुन के और इस वीडियो को भी देख के कि ये संभव है। धन्यवाद सर। क्लोजिंग वर्ड्स बोलना चाहते हैं तो आप बोल लीजिए। धन्यवाद सर। एक पोयम से मैं समाप्त करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। मैं बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। न जाने इस जीवन की मंजिल है भी या नहीं, यह हमारा फैसला, यह कार्य करने का गलत है या सही, पर दूर क्षितिज पे आशा की किरण जो देगी हमारे कार्यों को एक नया समीकरण। आशा जीवन की वो छोर है जो मरते को जिंदा करे, ऐसी डोर है। फिर भी निराशा कभी कभी छा जाती है, इस डूबते नाव को सिर्फ तुम्हारा सहारा किनारा लगा जाती है। न जाने क्या होगा बिन तुम्हारे परिणाम, दुआएं तो दुआएं, जो देते बद दुआएं उन्हें भी हमारा प्रणाम। धन्यवाद सर। गुरुजी शानदार। यस, चलिए आगे प्रवीण जी। उपेंद्र पांडे जी, आंखें नम हो गई आपके आगे, सर स्वतः झुक रहा है। आपको और आपकी धर्मपत्नी जी को, आपके परिवार को, हम सबके लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शत शत नमन। आशा करते हैं कि शीघ्र ही ये जो आपका प्रयास है ये पूरे देश भर में फैलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। क्योंकि इतना अद्भुत जो आपने वीडियो दिखाया है, मैं जानता हूं कि ये हमारे लिए वाकई एक प्रोजेक्ट के रूप में उभरेगा और इसका श्रेय आपके परिवार को जाएगा। और पांडे जी, आपने न केवल पर्यावरण, आपने बहुत से मुद्दों पे जो कठोर शब्दों से भी हमें लताड़ा है, शहर वासियों को और पढ़े लिखे हम जो हैं वर्ग को, आपका दर्द समझ में आता है। आपकी पोएम ने भी वो दर्द झलकाया और आपको हम आश्वासन देते हैं कि हम सब जागेंगे, शहरों में, महानगरों में वास करने वाले भी जागेंगे आपकी बात से और इसमें हम लोग जी जान से जुड़ जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। कर्मयोगी उपेंद्र जी, आपको सादर प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
सर अभी प्रवीण जी, आपसे अनुरोध है कि सभी पैनलिस्ट को, सभी जो स्पीकर्स हैं आज के, उनको आप पैनल में आमंत्रण दें और अपना अपना वो कैमरा ऑन करें, वो जिससे कि आज हम के प्रश्नों को ले पाए। सीए शिंदे जी प्रस्तुत अगर हैं तो उन पे स्पॉटलाइट की जाए। डॉक्टर अरुण जोशी जी, डॉक्टर एस के गुप्ता जी, आचार्य प्रेम भाटिया जी तो आ गए। वेरी गुड, प्रेम भाटिया जी भी आ गए। सर आपने अपना मुकम्मल करना है प्रेम जी। आचार्य जी अगर हो तो 2 मिनट कर लीजिए। हाँ जी, पहले आचार्य प्रेम भाटिया जी की बात को जो उनका रह गई थी बीच में, उसको जी, पूरा जी। करते हैं और उसके बाद आगे पैनल जी, जी, डिस्कशन जी। में चलते हैं। जी, तो जी आचार्य जी। अभी बातचीत हो रही थी कि है ना, कितना अच्छा उपेंद्र जी ने किया है ना, हम सबके लिए प्रेरणा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कितने बुरे हम सब लोग हैं जो इतना कचरा फैला रहे हैं, कि हम उनसे ये सीखें कि कचरा फैलाएं नहीं, है ना, ऐसा प्रॉब्लम ही ना आए। ऐसे मैं सोच रहा था स्वास्थ्य के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां जो फार्मा की कंपनी है, और बताते थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, है ना, मानवता के लिए बड़ा में बहुत करोड़ों और अरबों रुपए लगे हैं, और इसलिए उनकी लाइफ में ड्रग्स निकालते हैं, उनका इलाज है। मैंने उनसे एक बार प्रश्न पूछा था कि सर, इतना लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगने के बजाय यदि आप 1% भी प्रिवेंशन लगा दें तो इतना पैसा बच जाएगा। पूरे देश का कितना बच जाएगा, कितना हमारा बौद्धिक हमारा जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बच जाएगी। क्योंकि वो जो रिसर्च हो रही है इसीलिए कि खर्चा, मुझे लगता है आचार्य प्रेम भाटिया जी का नेटवर्क कनेक्शन फिर से वीडियो खराब हो गया। तो प्रवीण जी, आप सभी स्पीकर्स ऑफ द डे को वीडियो ऑन करा के पैनल में लीजिए। वीडियो ऑन आपकी तरफ से होगा या खुद कर सकते हैं? रिक्वेस्ट मैंने ऑल दी को बना दिया है, सब लोग वीडियो ऑन कर लें। उपेंद्र पांडे जी हैं, शिंदे जी हैं, डॉक्टर गुप्ता भी थे, अभी आ गए, भाटिया जी फिर आ गए। अब मुझे लगता है पैनल डिस्कशन में उनसे प्रश्न ले लेंगे, तो ठीक है, उसमें कवर हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट। हाँ जी। एक 2 स्पीकर्स और मिसिंग हैं, एक और आई थिंक डॉक्टर अरुण जोशी जी। डॉक्टर अरुण जोशी। एक बार आप लिस्ट में चेक करेंगे, अभी हैं यहाँ पे, नहीं है? अरुण जोशी जी पार्टिसिपेंट्स में नहीं सर, आई थिंक अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अगर वो आ नहीं जाते है हैं सर, तो हैं बीके सतीश कुमार जी हैं। हाँ, सॉरी, उनको ऐड कर लिया है, उनको ऐड कर ठीक है, लिया है मैंने। नहीं है, ठीक है। तो यदि बीच में आपको दिख जाते हैं तो फिर उनको ऐड कर लेंगे। तो आप सभी अटेंडीज को इनवाइट कर सकते हैं अब प्रवीण जी प्रश्नोत्तरी के लिए। सर रेज्ड हैंड्स अगर हैं तो आप देखें अपने स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रथम आई विल जस्ट सेट द बॉल रोलिंग। डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, सर आपने ये बताया कि इतने सारे बीमारियां ऑलरेडी हमारे मतलब विश्व भर में, भारत में लोग ग्रसित हैं, तो आपको कोरोना के आगमन से उतना भय लगा जितना एक साधारण मनुष्य को लगा होगा, या आप तो जानते थे कि बीमारी तो ऑलरेडी है, लोग तो ऑलरेडी मर रहे हैं? आपका क्या था टेक? Hello. What? ये डॉक्टर गुप्ता के लिए प्रश्न है। हाँ जी, गुप्ता जी के लिए। डॉक्टर क्या गुप्ता जी, करना है फिर? Can I talk? मतलब कोरोना से लोग मर रहे हैं, बहुत जाने जा रही हैं, लेकिन आप जानते हैं ऐसे डॉक्टर के ऑलरेडी इतनी बीमारी फैली हुई है, तो कोरोना इज वन अमंग दी सो मेनी, या ये कुछ खास ही खतरा है? कोविड जो था, कोविड वाज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरी डॉक्टर। फॉर लास्ट 15 months आई हैव बीन मैनेजिंग कोरोना। मतलब यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा कोरोना, हमारे इसमें भी बहुत ज्यादा कोविड हुआ। ब्रह्मा कुमारी में
बिकॉज वी आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, तो हम लोग हेडक्वार्टर्स में हैं, तो हमें सारे भारत का ही पता लगता रहा, और भारत के जितने भी पेशेंट्स थे जो मतलब जो हमारे ब्रह्मा कुमारी कनेक्शन में थे, अदरवाइज भी बिकॉज मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन देता रहा हूँ लगातार। तो कोविड वाज अ स्पेशल प्रॉब्लम एंड वी हैव बीन स्पेशली फॉर लास्ट 2.5 मंथ्स हमने बहुत सारे लगभग 500 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स को अपने यहाँ ट्रीट किया। हमारे यहाँ कोविड सेंटर माउंट आबू में भी रहा और यहाँ भी रहा, और प्लस हमने अपने कैंपस में लगभग 250 लोगों को कोविड हो गया था, और हमने हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा था। मैंने लगभग 253 लोगों का हमने यहाँ इलाज किया, और उसमें से एक भी डेथ नहीं हुई। We approached three-dimensional, or we say three-tier immunity approach. जैसे 3-dimensional healthcare approach थी, उसमें spiritual immunity, mental immunity, मतलब उसमें psychological immunity, emotional immunity, उसमें physical immunity भी, उसमें proper diet, high protein diet, और proper sleep, proper exercise, और proper जो उनको फूड जो मतलब फूड की जो थी प्रॉपर दिया गया, और प्लस जो मेडिकेशन तो दी गई, वॉट एवर कन्वेंशनल मेडिकेशन वाज गिवन, बट अवर प्रोग्नोसिस वाज वेरी गुड। अब लगभग मैं समझता हूँ 1-2 महीने हो गए लोगों को ठीक हुए, और लोग बहुत अच्छी हेल्थ में हैं। मतलब किसी को मैं समझता हूँ किसी को भी ना लंग प्रॉब्लम हुई, ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई, साइकोलॉजिकल 40% पेशेंट्स कोविड के बाद दे आर लेफ्ट विद प्रॉब्लम्स। तो ये सारे मैंने अपने उसमें केयर में किया, और लोगों को बड़ी सिंपैथेटिक अप्रोच। सबसे बड़ी मैंने जो प्रॉब्लम देखी है एंजाइटी और फियर। इफ ए डॉक्टर कैन रिमूव द एंजाइटी एंड फियर, द प्रॉब्लम डिसअपीयर्स। जहाँ एंजाइटी और फियर आ गया जिसके अंदर, ऐसे 4-5 पेशेंट थे जिनके एंजाइटी और फियर आया, वो उनकी तबीयत खराब हो गई। मतलब फिर उनको बाद में एंजाइटी एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिए गए तो इम्प्रूव। तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम मैनेजेबल है, प्रोवाइडेड हम अपनी स्पिरिचुअल में लगता है। बीमारी का मतलब ही क्या, बी मीन्स फियर, मारी मीन्स कॉन्स्टेंसी ऑफ। अगर डर मेरे अंदर तो सारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा ही खराब हो गया, मेरी पूरी इम्यूनिटी खराब हो गई। अगर हम बिल्कुल सही बात है एकदम। मैं चाहूंगा कि मैं एक दूसरा प्रश्न भी लूं। 2:20 हो रहे हैं, तो हमारे पास उचित समय है, बहुत समय है कि हम सभी के प्रश्नों को इसमें अकोमोडेट कर सकें। मैं अगला प्रश्न लेता हूं अली मैटियस से। Mr. Ali Matthias, if you are listening to me, you can ask your question. And my request to all the audience and the panelists is keep your question to the point and straight and brief. And response also to be very brief. For further details, people can contact us and we can connect the audience with the subject matter expert which are there in the panel today. Okay, so Ali Matthias ji. You have a question? Okay, next in the line is Mr. Bharat Tiwari. Bharat ji, straight question in brief words. Dr. Gupta and to all the panelists, my question is to Dr. Satish Kumar Gupta ji. Dr. Gupta, like I had written, कि अगर प्रार्थना वार्थना करो और मतलब 12 महीने में अगर 4-6 महीने अगर जंगलों में रहो तो उससे कुछ फर्क पड़ता है, जो आपने इतनी विस्तार में बताया? जंगलों में रहने की आवश्यकता नहीं है हमको। जंगल बिकॉज हम लोग ग्रस्त में रहने वाले सभी हम हैं। हमारी ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल बीइंग। बिना सोसाइटी में हमें सोसाइटी को छोड़ के नहीं जाना है। सोसाइटी में हमें समझना है कि हम कौन है, हमारा सत्य क्या है। बिकॉज मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है, योग मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है, कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य का अन्वेषण करना है आपको अपने अंदर, मैं कौन हूँ। कि सत्य से अगर आप जुड़ गए, मैं आत्मा हूँ, आई एम ए बीइंग विद द ह्यूमन बॉडी, तो आपके अंदर फियर खत्म हो जाता है, एंजाइटी खत्म हो जाती है, एंगर खत्म हो जाता है। बिकॉज मैं भी बीइंग हूँ, आप भी बीइंग है, मेरी पत्नी भी बीइंग है, मेरे बच्चे भी बीइंग है, मेरे फेलोज भी बीइंग है, मेरा बॉस भी बीइंग है, मेरे सबऑर्डिनेट्स भी बीइंग है, और हम बाय नेचर पीसफुल हैं, बाय नेचर लवफुल हैं। जब आप इस फीलिंग में आते हैं तो आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रहते हुए ही कमल पुष्प के समान न्यारा प्यारा रह सकते हैं। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहता है किंतु न्यारा प्यारा रहता है जी। और वो जो है शक्ति जो है, आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं ऐसी।
जब शुद्ध आपकी प्रवृत्ति होती है तो उससे परमात्मा से जुड़ सकते हैं, वो सुप्रीम एनर्जी से जुड़ सकते हैं, जिससे कि सातों अंग, जो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की, टाइम कम था, कि हमारी बॉडी के सातों जो अंग है, 8वां अंग है, 80,000 अरब कोशिकाओं उसी से नरिश होती है। और हमारी टीम पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। जो हमारे अंदर आज, जो हम इंटरनेट से, मोबाइल से, टेलीविजन से बहुत सारा डाटा अंदर डाल रहे हैं ना, वो एक नेगेटिव टीम हमारे अंदर बनाता है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना देता है, जो उस एनर्जी को फ्लो करने से रोकता है। इसमें मैंने जो काम किया है, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर मॉडल ऑफ हेल्थ पे जो काम किया है, और पिछले हमारे, इससे क्या हुआ, मैंने देखा कि सारी बीमारियां मन और तन की हम इजीली एड्रेस कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी, जैसे हमने प्लास्टिक की बात करते हैं, हम भूपेंद्र पांडे जी बहुत सुंदर बताया, मैंने और प्रेम भाटिया जी को सुना, शिंदे साहब को सुना, तो हम सब बात कर रहे थे कि तो सबसे बड़ा जो पोल्यूशन है इसमें मेंटल पोल्यूशन है, और उन सब पोल्यूशन का कारण हमारा मेंटल पोल्यूशन। अगर हम मन को ठीक सुधार सकें तो हम सारे पोल्यूशन भी खत्म कर सकते। अब इसी में संदर्भ में जो आपने कहा डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न जो है वो इसी के संदर्भ में, इट्स अ कॉरोलेटरी टू व्हाट यू सेड, कि जो हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में, कहीं भी देख लो आप, हमको बीमारियां कम है, पहला। दूसरा, उसी के साथ में आगे जा रहा हूँ कि जैसे मैं जाता हूँ यहाँ दिल्ली से, मैं जब 4-6 महीने जंगल में रहता हूँ तो मैं जूते वूते कुछ नहीं पहनता, मैं तो नंगे पैर चलता हूँ, ठीक है, और मैं हो गया हूँ 60+। तो वहां के जो रहने वाले हैं, वहां के जो रहने वाले, कहीं पर देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न तक, उनको जो हमारे को शहरी वालों को बीमारियां, वो कुछ नहीं है, एक आर्थराइटिस, वाइटिस, गाउट के अलावा। तो वो क्यों है? आपने तो इतनी रिसर्च करी हुई है, तो उसमें से क्या सार निकलता है जो हमको यहाँ शहर में रहते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं? जहां तक मेरे को समझ आता है, जितनी वनस्पति है वो सारा नेगेटिविटी खींच लेती है हमारे बदन से, जैसे गोरे लोग ओशंस में जाते हैं। तो ये क्या सत्य है? मे बी यू कैन टेल द बेस्ट। यू आर राइट, यू आर वेरी राइट। मैं बिल्कुल ठीक कह, नेचर हमें हील करती है, किंतु सबसे जो, अब हर आदमी तो नेचर में जाकर रह नहीं सकता है जी। दिल्ली में रहने वाले दिल्ली में रहेंगे, बॉम्बे में रहने वाले बॉम्बे में रहेंगे, हाँ 2 महीने चलेंगे वो अलग बात, बट आपको समाज के अंदर रह के आप अपना इतना आभामंडल इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपना आभामंडल, अपना अपने आसपास एटमॉस्फेयर, आपके जो विचारों से जो कुछ आप सोचते हैं वो आपकी बॉडी को हील करता है, डैमेज। मैंने देखा है जहाँ पर रश कम है, पोल्यूशन कम है, जहाँ पर वो लोग नेचर से जुड़े रहते हैं, अपने आप ही शांत रहते हैं। जहाँ कंपटीशन है, कंपैरिजन है, वहां पर नामवांछन की इच्छा है, ईर्ष्या द्वेष है, ये नेगेटिव एनर्जीज इंसान को बीमार करती है। सिनिसिज्म है, हॉस्टिलिटी है, रिवेंजफुल बिहेवियर है, दूसरों में फॉल्ट नजर आते हैं, तो उससे हमारे सिस्टम, हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं, और उससे हमारे सारे जो सपोर्ट सिस्टम ब्रेक हो जाते हैं, और फिर आदमी उसके कारण हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो जाती है, हमारा वर्टिकल कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। और जब स्पिरिचुअली हम एम्पावर रहते हैं तो हमारे अंदर ये एनर्जीज हो जाती हैं, और हमें प्रॉपर फूड भी मिलता है वहाँ पर। यहाँ जो फूड मिलता है हमें ज्यादा कंटेमिनेटेड फूड मिलता है। जी। आपने बताया पोल्यूशन, जी, बहुत बड़ी बात है, सिटीज में बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है। जी। हम फिर भी अपने जहाँ भी रहते हैं प्रॉपर सिलेक्टिव हो सकते हैं, हमारी बुद्धि भी ठीक काम करती है, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैंने देखा कि क्योंकि सारे सिटीज, मैंने जो पेशेंट देखे हैं उसमें सारे सिटीज के पेशेंट्स आए हैं और गाँव के भी आए हैं, कुछ अच्छे, मतलब जैसे डायबिटीज में 4,000 से ज्यादा पेशेंट की इंसुलिन और गोलियां भी छूट गई, वो बिना मेडिसिन के ठीक हो गए, है ना। जो इतनी दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की 50 गोली आधी गोली पर उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस खुलना सहज बात है क्या, कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस वो खुल गए, जो बाईपास फेल हुए थे, एंजियोप्लास्टी फेल हुए थे, वो ठीक हो गए, और ये लाखों तक मैसेज पहुंचा, लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें रोकूंगा तिवारी जी भी और सतीश कुमार गुप्ता जी भी, कि क्वेश्चन को थोड़ा छोटा रखें और आंसर को भी थोड़ा छोटा रखें, जिससे हम मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट कर पाए। लास्ट इसी एक और क्वेश्चन है क्या भरत जी? नहीं, इसी की कोरोलरी है। हाँ जी, बोलिए। आप माउंट आबू में इतना काम कर रहे हो, हैं डॉक्टर साहब, अब आप ये बताओ कि जब पूजा करते हैं तो वो पॉजिटिव कलेक्टिव एनर्जी होती है ना। अभी ये कोरोना के चक्कर में सब बंद हो गए,
हाँ जी। आप अपने बचपन में देखो, हर मोहल्ले में पूजा पाठ जो भी है होता था, ठीक है। तो क्या वो पॉजिटिव कलेक्टिव एनर्जी, आप शहर में रहो या पहाड़ों में रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या? सर फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो मैं कितनी भी पूजा करूं, मेरा मन शांत नहीं है। देखिए पूजा, मेडिटेशन और प्रेयर में क्या फर्क है? मेडिटेशन इज टू वे कम्युनिकेशन, प्रेयर वन वे कम्युनिकेशन। जी। तो मेडिटेशन में क्या होता है, हम परमात्मा से बात करते हैं, परमात्मा हमसे बात करता है एट थॉट लेवल। और प्रेयर में हम बोलते हैं, किंतु परमात्मा सुनता है, सुनता हमें पता नहीं। प्रेयर में हम मांगते हैं, मेडिटेशन में मांगते नहीं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, कभी आप आराम से बैठेंगे तो मैं आपको, हाँ, I want to talk to you separately, जैसे हितेशी ने कहा, it's very important. Okay, yes, thank you. it will require some very deeper important. insights. So I would request Tiwari ji to connect with Satish Kumar Gupta ji and get further details about it. Thank you. Our next audience who wants to ask question is Mr. Rakesh Garg. Yes, Rakesh ji, please ask your question. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर गुप्ता से है। गुप्ता साहब, जो अभी कोरोना में जो है ये काफी विवाद चल रहा है, मतलब कि कुछ एलोपैथ डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास कोरोना की कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल साहब का एक वीडियो चलता है कि सब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे 35 रुपए की दवाई है, दे आर दी ओनली एक्चुअल टू मेडिसिन, और लोगों के ऊपर लाखों रुपए के बिल बने हैं कोरोना में जब वो एडमिट हुए हैं। तो व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट? पब्लिक बड़ी परेशान है, मतलब डॉक्टर्स पढ़े लिखे डीएम लेवल तक के डॉक्टर्स, इफ दे आर डूइंग अ रॉन्ग ट्रीटमेंट, डॉक्टर के अग्रवाल के हिसाब से तो वाइसेलॉन और एक दूसरा दवाई जो है ब्लड थिनर, दे आर दी ओनली टू मेडिसिन जो कोरोना को ट्रीट करता है। एंड ही इज अ पद्मश्री अवार्डेड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द IMA, so we cannot take his statement as a light thing. He claims that these are the only two medicines for the corona treatment. Then why doctors are giving the expensive medicines in the treatment? Why they are not giving these cheap medicines? So what is the fact behind this? एक मिनट, 16-17 महीने में जो हमारे पास रिसर्च निकल जो चीज आपके साथ काम करती है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है वो आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी वेरिएंट है आपके अंदर आता है, आप उसको बॉडी फाइट आउट करके खत्म कर देती है। उसके अंदर वो अंदर जाके वायरस है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और वो हमारे लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाता। लंग्स में पहुंचता तो भी खत्म हो जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, या और कोई किसको HIV है, या कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है, कोर्टिसोल ले रहा है, एस्थमा की बीमारी है, ब्रोंकिटिस है, स्मोकर है। स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हैविंग बैड इफेक्ट्स ऑफ कोरोना, मतलब बैड निमोनिया इन द लंग्स। तो ये देखने में आया कि जो इन लोगों को ज्यादा रिस्क है, अगर आपकी डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल्ड है, एस्थमा ठीक है, कंट्रोल में है, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर है भी तो आप अगर ठीक कंट्रोल रखते हैं तो कोई रिस्क नहीं होता है। और दवाई तो मेन इम्यूनिटी है। दूसरी मैंने बताया 3 टियर इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास आए हैं और सारे भारत में हमने ट्रायल करके देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं जो हमारे कनेक्शन में लोग रहे। और दूसरी बात जो है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात एक स्टीरॉयड है। जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है वायरस से, वो वायरस की दवाई जो है वो इन्फ्लेमेशन, हम उससे जो है वो सूजन वाइसोलॉन जैसे लेते हैं आप, या डेक्सोना लेते हैं। और एक ब्लड थिनर लेना पड़ता है, ये खून की नसों में जमा देता है खून को। तो ब्लड थिनर जैसे आप या तो एपेक्साबैन के नाम का दवाई, आपको नाम बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि एपेक्साबैन या वारफेरिन जो शुरू करते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। 2 ही दवाई मेन काम करती है। डॉक्टर के अग्रवाल कहना ठीक था। बाकी जो जैसे एंटीवायरल ड्रग है उनका ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में हमें यूज करनी पड़ती है। कुछ पेशेंट आते किस स्टेज में, हमारे पास पेशेंट उस स्टेज में आते हैं जब बहुत लंग्स पूरी तरह खराब हो चुके होते हैं। उस स्टेज में सेव करने के लिए हमको वो सब ट्रायल देने पड़ते हैं और उसलिए ट्रीटमेंट और ऑक्सीजन लगातार देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है, 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। और उसके बाद भी बच नहीं पाती कि लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो आई थिंक इट इज द राइट टाइम पे, अगर राइट टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और राइट आप डायग्नोसिस हो जाता है, राइट ट्रीटमेंट मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो प्रिवेंशन है। 95% केसेस तो प्रिवेंशन से ठीक हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर मास्क सबसे अच्छी पहन लीजिए, नाक और मुंह के अलावा वायरस कहीं से जाता नहीं है आपकी बॉडी, और कोई कान से नहीं जाता,
बहुत बढ़िया एकदम। इसको कोरोना की जो हमारी सारी एडवाइजेज हैं उनको जरूर फॉलो करें, आध्यात्मिक भी और मेडिकल साइंस की भी, क्योंकि दोनों का ही समन्वय जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इम्पोर्टेंट है। पूरे के पूरे एलोपैथी को हम मतलब नदारत नहीं कर सकते, उसको खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ जी, जो सीरियस पेशेंट वहां पे हॉस्पिटल ही उसको बचा सकता है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो आई होप आपको राकेश जी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियंस, नेक्स्ट प्रश्न पे। अरविंद तिवारी जी, यस अरविंद जी अपना प्रश्न कीजिए। जी धन्यवाद हितेश जी। सबसे पहले सभी आज के वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें बताई कि एक विस्तार से चर्चा का विषय अपने आप में बन गया है। मैं अरविंद तिवारी प्रोजेक्ट युग परिवर्तन और डीवीसी कंसल्टेंट से जुड़ करके आप सब लोगों का यहाँ पे इस कार्य में हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। मेरा आज प्रश्न है उपेंद्र पांडे जी से। उपेंद्र जी, आपने प्लास्टिक मुक्त समाज के लिए जो कार्य किए हैं, हमारा एनजीओ भी इस पे कार्य करता है, लेकिन हमने जो इस पे कार्य करते हुए एक चीज पाई जिस पे चिंतन मनन चल रहा है, संभवतः आपने भी किया होगा, कि प्लास्टिक जो आप उपयोग में ला रहे हैं वो अंततः प्लास्टिक यहाँ पे रह जा रहा है, और उस प्लास्टिक से जो हानि है उतनी नहीं है जितनी खुले में पड़े रहने से हो रही है। परंतु प्लास्टिक के क्या अल्टरनेटिव्स हैं, इस पे अगर हम मिल करके काम करें, और आपकी क्या कार्य योजना है, मैं उसके बारे में अधिक उत्सुक हूं। जी राकेश जी। अरविंद तिवारी। पांडे जी, क्वेश्चन इज फ्रॉम अरविंद तिवारी जी। हाँ अरविंद जी। अरविंद जी, मैंने शुरू में ही बतलाया कि यहाँ सारे लोग जो हैं बदलाव की बातें करते हैं और खुद में बदलाव कोई नहीं चाहता। यहाँ हमें बदलाव की जरूरत है। मैंने ये जब हम लोगों ने इस अभियान के बारे में सोचा तो पहले लगा कि अगर हम लोगों को समझाएंगे, बोलेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, हमें उनको लुभाना पड़ेगा। हमने लुभाने के लिए ये ऑफर दिए, और अगर इसको प्लास्टिक समस्या नहीं है, प्लास्टिक अभिशाप नहीं है, इसको पहले समझना होगा। अगर आज प्लास्टिक नहीं होता तो शायद कोरोना काल में हम लोग शायद बच भी नहीं पाते। प्लास्टिक की वजह से आज हम लोग बचे भी हैं, ठीक ना। पीपीई किट जो है सब प्लास्टिक ही है। तो अंग्रेजी की वो जो कहावत, एक्सेस इज एनीथिंग इंजूरियस टू हेल्थ, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ठीक ना। प्लास्टिक का डिस्पोजल सही जगह तरीका से अगर हो जाता है, अगर उसका निष्पादन सही तरीके से हो जाता है, तो प्लास्टिक अपने आप में कोई समस्या नहीं है। हमें जितना जरूरत है उतना प्लास्टिक इस्तेमाल करें ना। हमें आज हम क्या कर रहे हैं, अपने व्यवहार में प्लास्टिक को लेते आ रहे हैं, हम अपने हैबिट में प्लास्टिक को ले आए हैं। हमको इसको निकालना पड़ेगा, हमें कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस चीज को समझना है। जी सर। उपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये जो अभी भी हमें समस्या हमारी वहीं पे है जिसपे कि हम लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, जो मेरा बहुत ही दृढ़ता से मानना। आपने कोरोना के काल में पीपीई किट वगैरह की सब बात की, लेकिन इसके संग एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप देखेंगे कि उसका बहुत विकराल रूप से जो डिस्पोजल का जो तरीका रहा, जो आपने बोला कि हमें स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, वो बहुत ही एक ऐसा दृश्य था जो कि अपने आप में आज भी दहलाने वाला हो जाता है कि हम उसको यहाँ कहीं फेंक देते हैं, जो कि और घातक होता चला जा रहा है। और डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप ही से प्रश्न करना चाहूंगा उपेंद्र जी, कि आपने जो इस पे बात की, मेरा प्रश्न वही का वही है कि एक वैकल्पिक क्षणिक व्यवस्था है, बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम प्लास्टिक का वेस्ट समाज से काफी सीमा तक कम होगा, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर आपने बात की, वो 7% पे आ रहा है अधिकतम, और वो 7% अधिकतम आ रहा है, और 13% बाकी 80% अभी भी समस्या है। तो इसका अर्थ ये आता है कि हमारे उपयोग की सीमा प्लास्टिक की अगर बहुत तेजी से इस पे ध्यान दिया जाए, तो उस पे जो उस बिंदु पे हम बात करना चाहते हैं, जो आपसे हम ये चाहते हैं, तो उस पे क्या आपका समाधान है। और इस पे प्रेम भाटिया जी ने भी कुछ हाथ उठाया हुआ है, तो प्रेम भाटिया जी भी इस पे जवाब दें, लेकिन पहले मैं आपसे चाहूंगा उपेंद्र जी। जी सर, धन्यवाद सर। मैं यही बता रहा हूं
कि हमें शुरुआत करने की जरूरत है। अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, ठीक ना। जब शुरुआत होगी तो इसका अंत भी होगा। जिस हिसाब से हम लोग को इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, उस हिसाब से कंसंट्रेशन नहीं है। उस कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर आज 7% हुआ तो कल 70% भी हो सकता है। सब कुछ होगा, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर कर पाए, तभी हम लोग युग परिवर्तन की बातें कर पाएंगे। नहीं तो अचानक ये पॉलिथीन रूपी जो बम है, बारूद रूपी, ये फूट पड़ेगा। और आज कोरोना के रूप में फूटा है, हो सकता है ये कल के डेट में जो बीमारी हो कोरोना के नाम पर हो। फूटेगा जरूर, हमें वो सब सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत जिस तरह से हम लोग कर दिए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, सारा सॉल्यूशन है। क्योंकि अभी इस मंच पर हम लोग ज्यादा शेयर करेंगे तो बहुत समय लगेगा। जी जी उपेंद्र जी, आपसे चर्चा करते हैं। जी प्रेम भाटिया जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। आप जी, नाउ आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। तो मैं उपेंद्र जी को भी कहना चाहता हूं, और तिवारी जी नमस्कार, आप भी सुनिएगा ध्यान से, कि साउथ के अंदर एक बहुत बड़े टेक्निकल प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने रोड बनाई है। उन्होंने प्लास्टिक को रोड के अंदर मिक्स कर दिया है, ताकि हमारी रोड्स बड़ी अच्छी बन जाती हैं और बहुत पायदार बन जाती हैं। So I think that's the best use of disposing the plastic, whatever it is scattered everywhere. So converting it to the roads, converting it to making a road. तो रोड ज्यादा देर तक चल जाती है, हम बहुत ज्यादा देर तक उसको रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा चल रहा है, और उन्होंने काफी लंबी बहुत सारे रोड्स बना दी हैं। तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो गूगल में मिल जाएगा कि हाउ टू पुट प्लास्टिक इनटू रोड्स। जी सर, रोड का विकल्प, सर रोड का विकल्प है, ब्रिक का विकल्प है, वॉल का विकल्प है, बहुत सा विकल्प तो सर नंबर्स ऑफ है। तो वो उपेंद्र जी, उनको कहने का मतलब यही था तिवारी जी का, कि यदि उनको हम ऐसा करके होल्ड डाल करके इसको कन्वर्ट कर दें, मकान बन जाए तो झंझट खत्म हुआ ना। रोड बन गई तो काम खत्म हुआ, ईंट बन गई तो काम खत्म हुआ। ये क्या ठीक बात? एकदम है सर, विकल्प है। हम वही बता रहे हैं कि आज अगर 7% हुआ कल 70% भी होगा, पर जब हम इस पर सोचेंगे तभी। जी जी बिल्कुल ठीक, डन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सोचेंगे नहीं तो फिर कैसे बनेंगे? बिल्कुल ठीक। धन्यवाद अरविंद जी एंड उपेंद्र पांड्या जी एंड प्रेम भाटिया जी इस प्रश्न के लिए। हमारे पास अगला प्रश्न है श्रीनिवास कुमार येरापुत्तु जी से, और उसके बाद नेम जैन जी से। तो दोनों आप तैयार रहिए। श्रीनिवास जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Thank you, CM, for this opportunity. And outside, I'm tremendously inspired by all the speakers who would not let go your opportunity to communicate knowledge to every one of us. You wanted to pour out all your knowledge in the given opportunity. That speaks of your very broad-minded approach. Thank you, one and all. Now I have two questions, and CM might stop me, so I will ask both the questions. One is for Dr. Satish Kumar ji, and the other is to Chandrakant Shinde ji. So after I complete my two questions, you can answer one by one. The first question to Dr. Satish Kumar Gupta ji is, you are doing a wonderful job as far as understanding the body, emotion, mind, and spirit aspect, and that is the ultimate way. Food is basically the original medicine. But unfortunately, in the name of allopathy, lot of medicine dumping has happened. And that is only helping to sustainment of health, but not cure of health. So this is a very well known factor. And we know the stories behind that. Now, my question to you is, with all the good work that you have done, and some more good work that is also possible, what is the reach? So you, as part of Brahma Kumari, to what extent you have reached this kind of an understanding of health among the people? What is the degree of reach that it has gone about all around? This, sir, you're muted. This question is to whom? Dr. Satish Kumar ji. Okay, Dr. Satish. आप म्यूट पे हैं सतीश जी? Muted, sir. Dr. Satish, you are muted. Okay.
Sanjay ji, what we are doing at Brahma Kumaris now, because ये जो प्रोजेक्ट था जो हमने शुरू किया 1995 में, शिफ्टेड टू माउंट आबू दिल्ली। उसके बाद प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स हमारे पास आ गए 2004 में। हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट करने के बाद और WHO को सबमिट करने के बाद फिर हमने तब से इसको एक ब्रह्मा कुमारीज के प्रोजेक्ट के रूप में लिया और हमने प्राइमोडियल प्रिवेंशन के रूप में शुरू किया। स्कूलों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्कूल अभी हम अडॉप्ट कर चुके हैं और वहाँ पर हम टच द लाइट प्रोग्राम के नाम से ये प्रोग्राम दे रहे हैं, ताकि बच्चे हमारे जो भविष्य में होने वाले बच्चे जो बड़े होने वाले हैं, सिटीजन्स बनने वाले हैं, उनको हम एक तो स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, वैल्यूज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा क्लियर बता रहे हैं। उनको जो है मेंटल पॉजिटिविटी कैसे आए हमारे अंदर, पॉजिटिव अप्रोच लाइफ के प्रति कैसे थे, और हमारा स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो शुड बी अडॉप्टेड एज ए सॉर्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी। अगर आप फूड जो है अपना फूड किस तरह से हो, सात्विक फूड हो और वो टाइम समय पर खाया जाए, टाइम पर खाया जाए, अवॉइड ऑल दी तामसिक एंड रासिक फूड कैसे हम करें, प्रॉपर सोने का समय, क्योंकि जो मॉर्निंग आवर्स में जब उठते हैं, जब हमने कहा सुबह 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त में जब मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद क्लियर वॉइस होती है। बच्चा जो 8 घंटे पढ़ के भी याद नहीं कर सकता, बच्चा 2 घंटे में 8 घंटे जितनी पढ़ाई कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है एग्जाम में। ऐसे बच्चे जो हमारे बच्चे जो फेलियर थे अब स्कूलों में, वो बच्चे अब टॉपर बन गए इस सिस्टम को अपनाने से। और सारी उम्र मैंने भी किया, क्योंकि मैं बचपन से मैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल में जुड़ा रहा। मेरी वाइफ भी इसमें जुड़ी हुई शुरू से, हम दोनों मिलके ही कार्य करते हैं ये। और हमारा बेटा भी डॉक्टर, वो भी MD कर रहा है, तो वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम लोग मिलजुल के कार्य कर रहे हैं और हमने देखा इसमें, और पूरा ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बड़ी एक स्कूलों में शुरू कर दिया। फिर प्राइमरी प्रिवेंशन, जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज थी, मोटापा था, हाई कोलेस्ट्रॉल था, ऐसी जैसे उनको ज़्यादा रिस्क था हार्ट डिजीज होने के बाद में, उनको भी हमने उनके लिए भी प्रोग्राम बनाए। 3 घंटे कैप्सूल कोर्स बना दिया और हमारे बहुत सारे सेंटर्स पे ये प्रोग्राम संडे को हम चला रहे हैं। और खाली भारत में नहीं, मॉरिशस में, मतलब बहुत सारे देशों में, लगभग मैं समझता हूँ 146 कंट्रीज में नहीं है। अगर हम कंट्रीज में, हम 146 कंट्रीज में हैं, किंतु कम से कम 100 देशों में तो चला रहे हैं। तो हम लोग जो है वहाँ पर सभी सेंटर्स में अप्रोच है हमारी रेगुलर चल रही है। और फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिनको हार्ट की बीमारी हो गई है उनके लिए हम यहाँ प्रोग्राम्स करते हैं। जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी कर लिया उनके हमें प्रोग्राम्स करते हैं। रेगुलर प्रोग्राम्स हमारे हर महीने में प्रोग्राम्स होते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं और इन हाउस भी होते हैं, जिसमें हम हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं, एंजियोग्राफी करा करके आते हैं, अपने 7 दिन रखते हैं, उनको टीच करते हैं, Excellent. उसके बाद दोबारा एंजियोग्राफी करा लेते हैं। Excellent, doctor. But my specific lookout is, what is the number of people you are able to reach since the formation? 10,000 लोग तो हमारे 10,000 पेशेंट्स तो हमारे पास आए हैं अभी तक। बाकी हमने हर पेशेंट को, हर दिलवाले को, हम उसे दिलवाला कहते हैं, हर दिलवाले को हमने 1 लाख का वो दिया है, एम दिया हुआ है। और काफी लोग तो 1 लाख को क्रॉस करके 5 लाख को भी कर चुके हैं, 10 लाख तक भी कर चुके हैं। Our aim is to spread. जैसे what is your plan to reach it pan India and pan world? हाँ, उसके लिए हमारा पैन वर्ल्ड भी हम कर रहे हैं, पैन इंडिया में भी कर रहे हैं, क्योंकि तो हमको और भी इसमें सपोर्ट की आवश्यकता है कि और भी संस्थाएं हमसे जुड़ करके इस कार्य को करें। तो हम अभी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स को, क्योंकि मैं CSI से जुड़ा हुआ हूँ, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, इंडियन एसोसिएशन फिजिशियन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, और सारी जितनी हमारी एसोसिएशन है IMA से जुड़ा हुआ हूँ। तो सब लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पर कई जगह एक्सेप्टेंस कम है, कई जगह एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। धीरे धीरे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतने हार्ट सर्जन्स भी हैं जो मेरे कोलीग्स रहे हैं, मेरे साथ ही जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, उनको भी जब हार्ट अटैक हुआ तो वो भी इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। We should work on a very intensive way, doctor, because that will hit the bullseye on health, and yes. Therefore we need to enlarge this. तो सबसे बड़ी मैं एक बात thank you, doctor, because एक बात शेयर करना चाहूँगा। एक बात आप सबके लिए बहुत वो रहेगा कि मुझे खुद को, जब मैं 95 में शिफ्ट किया, 96 में खुद मुझे तकलीफ हो गई। एट द एज ऑफ 37 मुझे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो गई और अचानक मुझे पता लगी, और मेरा ECG बहुत खराब हुआ। तो मेरे एक विदेश के डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया कि आप हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है। मेरे को बहुत एरिथमियाज होते थे, मेरा हार्ट बहुत मोटी हो गई थी, बहुत एंजाइना होता था, और उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब आप मुश्किल से 2 साल जी पाएंगे, क्योंकि मैं सारी रात सो नहीं पाता था, बहुत एरिथमियाज होते थे।
उन्होंने कहा आपको इसके लिए इमीडिएटली हार्ट की सर्जरी होगी, आपकी सेप्टोप्लास्टी होगी, हम यूएस में हम आपको AICD लगा देंगे। तो आई सेड नो, आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस। तो मैंने 6 महीने, लगभग 3 महीने 4 महीने बहुत पावरफुल मेडिटेशन किया। मेडिटेशन माना आई रिमेन कनेक्टेड विद द ट्रूथ ऑफ द सोल बीइंग एंड ट्रूथ ऑफ द सुप्रीम बीइंग, उससे मैं कनेक्ट रहा और मैंने अपने आप को देखा, मेरे अंदर इतनी शांति, जैसे कहते हैं रियल शांति, बीइंग इन द प्रेजेंट। लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। तो मैंने जब शुरू किया कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस मीन्स कंटेंटमेंट, मैंने अपने अंदर से एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो मैंने देखा मेरी जो दीवारें इतनी मोटी मोटी हो गई थी, इतना ग्रेडियंट बढ़ गया था। 6 महीने के बाद जब मैंने दोबारा वो कराया, इको कराया, तो मेरा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। इंजेक्शन फ्रैक्शन 90% थी, 65% हो गई थी। Wonderful, doctor. I think you're walking the talk. Thank you so much. Yes, thanks Sky, and thanks Dr. Gupta for the response. Can I have the liberty of my second question to? You need to wait for some time. I have kept few people waiting since long, so I would like to invite Mr. Naim Jain from audience to ask the question and kindly announce to whom this question is for. हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी नेम जैन जी, बिल्कुल पहुंच रही है, आप पूछिए। हाँ, किसी भी समस्या के 2-3 पहलू होते हैं। प्लास्टिक मैन्युफैक्चर अगर होता चला जाएगा और मार्केट के अंदर विभिन्न रूप के अंदर जाता चला जाएगा और उसका फाइनल डिस्पोजल यानी कि खत्म नहीं होगा, तो समस्या बनी रहेगी। आज प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज इतनी तगड़ी है कि कोई भी नया काम सोचता है तो पैसा बनाने के लिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि नए से नए मैन्युफैक्चरर्स इसमें आ रहे हैं। बहादुर शाह रोड पर दिल्ली में दाने वालों की संख्या, बनाने वालों की बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो अगर कंट्रोल करना है तो जो सोर्स है जहाँ प्लास्टिक के दाने बन रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस या बिल्कुल खत्म की आवश्यकता अगर महसूस करें या कम करने की आवश्यकता महसूस करें, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सामने आना पड़ेगा। हम लोगों को उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे मोटे जो उपेंद्र पांडे जी से अपना सिर फोड़ और एनर्जी टाइम लगाते जाएं, उससे छोटा मोटा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता जाएगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होगी। परंतु अगर सोर्स पर रोक नहीं लगाई गई और फाइनल जो चीज बनकर के आ गई, गंद कूड़ा आ गया, उसको बिल्कुल समाप्त नहीं किया गया, तो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए सभी लोग, ऑर्गेनाइजर्स और स्पीकर्स मेरे बात को पर बोले। बिल्कुल सही आपने इसका अवलोकन किया है, और जब तक ह्यूमन बिहेवियर में चेंज नहीं लाया जाएगा और जब तक गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू इसको नहीं करेगी और साइंटिफिक वर्ल्ड कुछ इसका या तो ऑल्टरनेटिव या इसका रिसाइकिल का सही तरीका नहीं निकाल पाएगी, और जो वेस्ट कलेक्शन एजेंसीज हैं वो प्लास्टिक को दूसरे गार्बेज से सेग्रीगेशन नहीं करेगी, तब तक होलिस्टिक सॉल्यूशन आएगा नहीं। एक हमारे मित्र हैं जो SALDP में भी इनरोल्ड हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस विषय में, प्लास्टिक से वापस पेट्रोल बनाने का, ऑयल बनाने का, क्योंकि प्लास्टिक इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो अगर उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसको वापस ऑयल बना लिया जाए उसमें, तो वो भी एक इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। तो काफ़ी हद तक वो सक्सेस हो गए थे, कुछ उसमें टीथिंग ट्रबल्स अभी बची हुई हैं, तो जब वो सॉर्ट हो जाएंगी तो फिर उसका अगला चैलेंज आएगा कि उसका बिजनेस मॉडल कैसे एक्यूरेट बने जिससे कि वो कमर्शियली फिजिबल हो जाए। तो ऐसे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन बड़ी अचंभे की बात है कि एक तरफ तो मनुष्य जो है चंद्र पे और मार्स पे पहुंच चुका है और दूसरी ओर इस प्लास्टिक मेनेस का इसके पास सही सॉल्यूशन नहीं है। एक पूरा का पूरा टेक्सास राज्य है अमेरिका का, जो कि अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, उसके बराबर का कचरा जो पैसिफिक ओशन में एक साथ इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से पता नहीं कितने स्पीशीज का, जलीय जीवों का कितना नुकसान हो रहा है। तो ये मनुष्य जो है, जो लाइक सो कॉल्ड सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है इस पृथ्वी पे, वही सबसे ज्यादा इसके सत्यानाश का कारण बन चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें को एग्जिस्टेंस सिर्फ मनुष्यों तक नहीं, दूसरे जीव जंतुओं तक भी अप्लाई करना पड़ेगा। और हम जो कह रहे हैं कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट, वो हर सिटीजन, ये सारे दूसरे जो जीव जंतु हैं ये भी इसी प्लेनेट के सिटीजन्स हैं। इनके होने के कारण ही पृथ्वी जो है इतना सुंदर और
जो है इन करोड़ों लाखों करोड़ों की बात क्या करें, अरबों खरबों में प्लैनेट्स में एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन इतना सुंदर और इतना वैरायटी के साथ उपलब्ध है। तो ये सही कह रहे हैं आप बिल्कुल नेम जैन जी कि जी सर। पूरी तरीके से होलिस्टिक जब तक इसका सोल्यूशन नहीं है तो ये एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज के अलावा और संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, ग्राउंड पे पूरा चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी उपेंद्र पांडे जी जैसे जितने भी लोग इसमें जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहते हैं ना जैसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो हो रहा है। अगर यही बड़े स्केल पे हो जाए तो ये कुछ भी बहुत कुछ बन जाएगा। तो जैसा कि कई लोग चैट बॉक्स पे बोल भी रहे हैं कि उपेंद्र पांडे जी अपना संपर्क सूत्र वहां पे छोड़ दें और उनसे कांटेक्ट कर लें। आप अवश्य उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म का अर्थ ही यही है कि जहां जहां पे जो जो चीज अच्छी हो रही है वो फिर सब जगह होने लग जाए। यस उपेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर। जैन सर, ऐसा है कि आपने ठीक कहा, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, पर हम लोग सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप देखिए बाजार में दारू भी अवेलेबल है, ठीक ना, पर हर एक व्यक्ति कोई दारू नहीं पीता। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें छोड़ना है सर। आप स्थिति आप अपने ऊपर बदलाव, अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? हम कम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा स्थिति क्यों नहीं बना दे? हम अपने ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? इसीलिए सर आज के डेट में मैंने इसको ना कोई एनजीओ रखा है ना कोई ट्रस्ट रखा है। मैं खुद एक एग्जाम्पल बनने का प्रयास कर रहा हूँ, उदाहरण बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आज अगर मैं भी अगर इस जो गार्डन हमारा तैयार हुआ है, ठीक है ना, इस अभियान को अगर मैं बाहर नर्सरी का बोर्ड लगा दूं तो डेली 10,000 रुपए इनकम में हमारी चालू हो जाए। 10,000 का मतलब 2 से 3 लाख रुपए महीना। पर मैंने इसको पीछे छोड़ दिया है। प्लास्टिक के ऊपर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, त्याग करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति त्याग करना नहीं चाह रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि सारा सुविधा उसको मिले। सब बदलाव सामने वाला करे, हमारे यहाँ बदलाव नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते। सरकार के भरोसे रहेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हम खुद प्रयास करें। आज सर मैं बतला रहा हूँ, कल एनवायरमेंट डे था, कल यहाँ पर एसआरसी है, यहाँ पर सिख रेजिमेंट सेंटर, वहाँ के ब्रिगेडियर आए थे कुमार सर, और उन्होंने देखा और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि पूरा मिलिट्री कैंप का पॉलिथीन जो है हम लोग रिसाइकिल करने के लिए देंगे। तो आज कैंटोनमेंट जो रामगढ़ कैंटोनमेंट है वो एक ट्रैक्टर चालू कर रहा है जिसमें सारे लोग पॉलिथीन को जमा करेंगे। तो सारा प्रॉब्लम सेग्रीगेशन का है सर। अगर सेग्रीगेट शुरू से ही हो जाए तो पॉलिथीन अपने आप में समस्या नहीं है। और आने वाले समय में हम केवल पॉलिथीन ही नहीं लेते, लोगों से शपथ दिलवाते हैं कि हम कम से कम पॉलिथीन का इस्तेमाल करेंगे। ये हम अनेकों स्कूल में हम लोग जाते हैं, लोगों को बतलाते हैं, बच्चों को बतलाते हैं कि हमें कम से कम पॉलिथीन का इस्तेमाल करना है, कि आने वाले समय में जब आप बड़े हो तो आपको प्लास्टिक का ढेर देखने को ना मिले। आज से 40 साल पहले प्लास्टिक का ढेर नहीं हुआ करते थे सर। ठीक है, ये हमारे उपयोग के कारण ये सब बढ़ा है। आज हम लोग अपने अंदर बदलाव ले आएंगे। उपेंद्र जी, गुरु जी आपकी अनुमति से, उपेंद्र जी आप अपना एक अगर डॉक्यूमेंट बना लें कि आपने कैसे आरंभ किया और कैसे करना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं पूरे भारत में कि ऐसे किया गया था। हाँ, और जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ता जाएगा हम उस पूरे नेटवर्क में, जैसे अभी आपने देखा कुछ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बात को रेप्लिकेट करने के लिए, तो उस नेटवर्क में फिर हर जगह हो जाएगा। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हर जगह जाएंगी। ऐसा इंतजाम जो हम इसमें सिस्टम में कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैंने स्वयं भी इससे मिलती जुलती चीज़ों को अनुभूत किया है कि कई चीज़ें मैंने देखी। मैं बहुत सिटीज़ में, सभी मेट्रो सिटीज़ में फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता रहता था कि कई सिटीज़ में जो चीज़ ढूंढ ली गई है, जैसे एक फुटपाथ की बात करें, एक अच्छा फुटपाथ बनाने का तरीका और उसको इस्तेमाल की एनफोर्समेंट मैंने देखी कोलकाता में। अब जब ये कोलकाता शहर फुटपाथ को इस अच्छे से बना के और उसको एनफोर्स कर सकता है, जितने भी चुनिंदा इलाके में किया गया वो, तो क्या दिल्ली मुंबई से नहीं सीख सकती? क्या हम उसको वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? ये बड़े ही अचंभे की मुझे बात लगी कि अगर एक चीज एक ही देश में अच्छी चल रही है, तो उसके एक राज्य में अच्छी चल रही है, तो दूसरे में जा क्यों नहीं रही है? तो कहीं ना कहीं इस देश के लोगों में सिनर्जी की कमी है, वननेस की कमी है। हम विविधताओं में इतना फंस गए हैं
कि हम चाहते हैं कि और अधिक से अधिक विविधताएं बना लें। हम अच्छी चीजों को भी दूसरों से शेयर ना करें, हम करते रहें, दूसरों को ना बताएं, तो ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है कि कहीं पे भी कोई भी चीज अच्छी हो रही हो तो सब जगह पहुंचे। तो मेरा आपसे अनुरोध है उपेंद्र पांडे जी, आप बिल्कुल दर्शकों से जो आज ऑडियंस आई हुई है, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप जरूर उनसे कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इसमें आने लगे। नमस्कार। हमारा, हाँ जी प्रवीण जी प्रेम बोलिए। भाटिया जी से एक सवाल है, प्रेम भाटिया जी और शिंदे जी से भी, कि आज का युवा, प्रेम भाटिया जी आपका उदाहरण है लाइफ में कि आपने मटेरियल प्रोत्साहन जो है आपने नकार दिए। आपको कहा गया कि आप बहुत पैसा बना सकते हो, लेकिन आपकी मनोस्थिति थी कि आपने कहा नहीं, मैंने सेवा करनी है। आप भी एक एग्जाम्पल लो, उपेंद्र जी एग्जाम्पल हैं। तो आज का युवा आपसे क्या सबक ले, कैसे आप देखते हो? आपने बहुत युवाओं के साथ संपर्क किया होगा शिविर करते समय, तो आज का युवा इस बात को समझ रहा है कि हमें अपनी जरूरतों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करना है और थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक लाइफ जीनी है? आपको लगता है कि ऐसा एक सोच आ रही है फिर से? नहीं प्रवीण जी, आपने उसे ठीक कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मिनिमाइज करने की बात नहीं है। ये हमारी जो एजुकेशन है वो हमें अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए पैदा कर रही है। हमें अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए, यही हमारी एजुकेशन है। तो ऐसी एजुकेशन लेकर के यूथ क्या वो कैसे समझदार बनेगा? तो समझदारी की एजुकेशन है ही नहीं, ये लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए है। मुझे याद है कि हम जब पढ़ाई करते थे, जब हम स्कूल कॉलेज में जाते थे, तो ये होता था कि कुछ मान लीजिए किसी ने कुछ व्यापार करना है, काम करना है, या कुछ परसेंटेज कमाने चाहता है रोटी रोजी के लिए, तो 5%, 7%, 10% हद बहुत हो जाती थी। इतना प्रॉफिट वो रख करके अपना काम करे। आज तो ये है कि 5 रुपए की चीज यदि आप 500 में बेच सकते हैं तो आप जीनियस हैं। ये हमारी एजुकेशन समझा रही है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सही समझें कि एजुकेशन क्या है। ये जो पढ़ाई लिखाई है ये हमें शोषण करने के लिए तैयारी कर रही है। कैसे शोषण किया जाए दूसरे लोगों को, कैसे शोषण किया जाए पूरे मानवता को, कैसे शोषण किया जाए प्रकृति को, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे प्रवीण जी? क्या वो अच्छा सोच के उसके करेंगे? ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कहना चाहता था कि हमें क्या जरूरत है, कैसे हम अपने गोल्डन ईयर्स में आ पाएंगे। एवरीबॉडी नीड्स टू बी एजुकेटेड प्रॉपरली कि मेरी खुशी मेटेरियलिस्टिक में नहीं है। मैटर की बड़ी थोड़ी सी औकात है मुझे खुशी देने की। मुझे खुशी मेरे क्वेश्चन से प्रॉपर से, जो कि बच्चा शुरू से, मैं ये कह रहा था, यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी। हर बच्चा समझना चाहता है, जिज्ञासु होता है, और अपने शुरू से ही वो सत्य वक्ता होता है और सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। ये 3 चीजें हर बच्चे में पाई जाएंगी। वो झूठ सीखता है बड़ों से, वो गलत कार्य व्यवहार सीखता है किसी और से, वो जो अपने प्रश्न करता है उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं होती तो भ्रमित होता है, वो खुद ही प्रश्न बन जाता है सोसाइटी के लिए। बिल्कुल सही बात है प्रेम भाटिया जी कि फॉर्मेटिव ईयर्स में मनुष्य को डेवलप ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो आगे जाके एक जो है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम का ही प्रोडक्ट बन रहा है, और हम सब भी उसी डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर भी अब कोर्स करेक्शन के लिए प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म, जो कि 17 यूनाइटेड नेशंस गोल्स में एक और ऐड कर रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फॉर ऑल। वो जब तक नहीं होगा बाकी सारे 17 गोल धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से आप सब लोग जुड़िए, और आपने तो काफी इच्छा भी व्यक्त की थी, और मेरा तो ये सभी से अनुरोध है जितने भी पैनलिस्ट आज आए हुए हैं कि वो जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म में जुड़े। कल 2 बजे उसका विमोचन किया जाएगा, तो उसके बाद हम जो है आपसे फिर उसकी औपचारिकता के बारे में भी बात करेंगे। तो समय हो चला है अब। हाँ जी, हाँ जी प्रेम जी। दो शेर पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने सोचा था कि आपको जरूर सुनाऊंगा, शायद आपको अच्छे लगेंगे। बिल्कुल इसके बिना आपको अच्छे लगेंगे। कहता है, अस्तित्व में कुछ कमी होती नहीं, अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं। ये देखिए क्या शेर है, अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, आदमी समझा है या समझा नहीं, आदमी समझा है या समझा नहीं, इतना ही है। आदमी समझ जाएगा तो गलती नहीं करेगा। हर गलती नासमझी से ही हो रही है, वो भले पोल्यूशन में है, भले संबंधों में है, भले किसी भी चीज में है। एवरीथिंग बिकॉज ही हैज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। रादर इन दूसरी सेंस में
हमने उसको अंडरस्टैंड ठीक से करवाया ही नहीं है। ये हमारे बड़ों का काम था, ये माता पिता का काम था, ये टीचर का काम था, ये एजुकेशन का काम था, जो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। इसलिए सारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, इसका कोई एंड नहीं होगा। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या किया जाए। और दूसरा एक और शेर देखिएगा कि खोज लेता है जो सही रास्ते, खोज लेता है जो सही रास्ते, वो हुआ करते हैं सबके वास्ते। बिल्कुल सही बात, सबके वास्ते। और 4 लाइनें और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मुझे लगता है शायद आप मुझे बिल्कुल मेरे से मुतफिन होंगे। कहता है, आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। और अच्छे होने की संभावना है या नहीं? और अच्छे होने की संभावना है या नहीं? संभावनाएं हैं बड़ी, गर दिल से तुमने कह दिया। संभावनाएं हैं बड़ी, गर दिल से तुमने कह दिया। मुझको लगता है कि मेरा एक दोस्त साथ चल दिया। मुझको लगता है कि मेरा एक दोस्त साथ चल दिया। हितेशी, मुझे क्या लगता है, प्रॉब्लम मेडिकल सर्विसेज बढ़ाने का नहीं है, प्रॉब्लम प्रिवेंशन को ठीक से दिखाने का है, जी के दिखाने का है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात प्रेम भाटिया जी। यही सेंट्रल थीम लेते हुए हम नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण कर रहे हैं कि डिमांड फुलफिलमेंट इकोनॉमी की बजाय नीड रिडक्शन इकोनॉमी अगर हम बनाएं तो जाके ये पृथ्वी जो है सबके लिए रिसोर्सफुल हो जाएगी। क्योंकि ये कहावत है कि द वर्ल्ड is not enough to fulfill one man's greed, but it is sufficient to fulfill everyone's need. Everybody needs. Yes, of ये course. बिल्कुल सत्य बात है। हाँ जी। तो मुझे यदि नीड्स का पता भी नहीं चलेगा, if I'm not aware about my needs, then I'm mad enough to go, चलो दुनिया मुट्ठी में। मुझे यार, मुझे अपने आप को मुट्ठी में करना है, मुझे अपने को समझना है, मुझे अपने में जीना है। And I don't require money much. I don't require much. I require. Because ये चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, no doubt, it is necessary. But how much, ये समझदारी है। If I understand this much I require, that's all. Then I have lot of time, energy is saved, and I can really invest it in something better than what I can do otherwise. So that सही is very बात good. है ये बिल्कुल। और एक और कहावत है कि 70% धन जो हम जीवन भर कमाते हैं जी, हम उसका यूज भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिकॉज नहीं सिर्फ समझ 30% ही ऑन एवरेज हम यूज करते हैं। यानी 70% जो धन कमाने में लगी हुई मेहनत थी वो अगर मीनिंगफुल मिशंस में लगा दी जाती तो शायद जीवन ज्यादा सक्सेसफुल कहलाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी। एक छोटी हाँ सी जी, बात प्रेम मैं और भाटिया कहना जी। चाहता हूँ। हाँ जी, एक और चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शिविर होते थे उसमें काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आते थे, डायरेक्टर्स, एम्स के भी डायरेक्टर आते थे। उन्होंने फुल उसमें कहा था कि इफ यू डू अभ्यास रेगुलरली, इफ यू डू योगा रेगुलरली, 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। अब देखिए कहाँ है झंझट, कितनी बीमारियां, हम किसके लिए दवाइयां खोज रहे हैं, जो बहुत आलसी हैं, जो बहुत इरिस्पॉन्सिबल हैं, जो बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं, उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक होकर भी खराब ही करेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और मुझे मौका दिया कोशिश करने का। शुक्रिया वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका प्रेम भाटिया जी एंड सभी पैनलिस्ट का। और ये समय हो चला है आज के सेशन के कंप्लीशन का। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम अमित यूनियन जी से लेंगे। सिंधी से एक सवाल सर, आप and one from me sir. अभी सिर्फ एक क्वेश्चन एडमिट होगा, वो है अमित जी से, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। कल इसका ग्रैंड कंक्लूजन है और उसके बाद परसों जो है कैंडिड कॉन्वर्सेशन है। तो जितने भी प्रश्न रह जाएंगे वो परसों हम सीधी बात के रूप में 11 बजे से 3 बजे प्लस करेंगे। 3 बजे रोज दिन रोकेंगे नहीं। अगर प्रश्नों की जो है स्ट्रीम चल रही होगी तो उसको चलने देंगे, लेकिन आज हमें थोड़ा रोकना होगा। अमित जी, आपका अपना अंतिम प्रश्न आप कर लीजिए जो आपका। And finally one favorite question to Shinde ji, only one. Okay, चलो आप you are a hard negotiator, so let me take 2 questions and after which we will close.
Before that, no, before that, I'm really running out of time. I am really waiting for half an hour. Yes, yes, Amit ji, please go ahead. I need so this question is for the Brahm Kumari as an organization and hence obviously Dr. Gupta. One word quick question and one word answer. Is there a timeline of an year that BK organization largely has put to bring golden age for everybody? If yes, what is that? If no, if there is a tentative year, just one word answer, please. Thank you. आपका म्यूट पे आ रहा है गुप्ता जी म्यूट पे आ रहा है There's one line answer is the day you are ready for golden age, the golden age will come. Great. So I expected this rational answer from Gupta ji, and this is bang on because we need. There's no date. I think the need is to put a deadline. I think a lot of organizations have been saying and talking about it. The need is to put a deadline. Otherwise, this is probably sounds like a never-ending activity. A lot of NGOs are working towards it. Time is over. I'm done. Thank you. I have to create the golden age. We have to create the golden age. And yes, and Gupta ji, if you have heard the deadlines given by the Project YugParivartan team, by 4th June 2025 in India and by 4th June 2050 all over the world. यदा यदा हि धर्मस्य का अर्थ यही है कि जब जब और जहां जहां धर्म की हानि हो तब करना है. किसी भी पौराणिक स्क्रिप्चर पे अगर 4,32,000 साल और लिखा हुआ है तो वो लोग वेट करते रहे हैं, हम नहीं करने वाले. प्रोजेक्ट युग परिवर्तन टीम ने ठान लिया है, इसीलिए युग परिवर्तन ना बोल के हम प्रोजेक्ट युग परिवर्तन बोल रहे हैं और प्रोजेक्ट का अर्थ है बिगिन डेट और एंड डेट के साथ ही होगा. तो 4 जून 2025 तक सभी लोग जुड़ जाएं. थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्लास्टिक फ्री कैंपेन्स and Brahma Kumaris and Prem Bhatia ji, all the people who are doing good to the humanity, if they come together, the speed will be really lightning speed. So with this, one last question from Srinivas Kumari Yeraputu ji, and then we will go for the vote of thanks for today, and then we'll close. Yes, Srinivas ji, very quickly question, and I expect a very quick answer from the panelists. Yes. Profuse thanks to CMG and Shinde ji. Thank you for joining this program and accepting our invitation, and also mentioning my name in your speech. Oh, thank you. Thank you. Yeah. My question is, sir, the so-called bad people and the selfish people, this I've asked you earlier, but for the benefit of the majority of the people here, okay, so-called bad people and the selfish people, they join hands very fast. And they do the negotiation and all the chuck, the planning goes on, and they're able to manage the world. But why are these good people not able to be that fast to join hands and collaborate and bring about the YugParivartan? What is wrong with these good people, sir? Please answer. No, it is not wrong. The good people are definitely coming together because they're mentally together, and only thing their percentage is less and bad people are more. So our efforts are not seen, and most of our good people efforts are at invisible level, that at thought level. And in Kali Yuga, the bad forces are very powerful. So our forces might be less. We must gather good people. So it's not that good people are not coming together. So therefore, we have to increase the power of the joining of all the good people. And of course. Something by 2025, sir. I ask all people here to join hands to do something by 2025. Yes, it is going to happen. It is happening now. Wonderful, wonderful. That's enough. Thank you, sir. Thank you so much. Welcome. Okay. So now we are at the end of the 4th day of this 5+1 day Project YugParivartan Global Summit 2021. And at the close, I would like to take this opportunity to thank all the speakers of the day to share their wonderful insights in the area of their expertise and working. And I also thank all the attendees to come on a Monday, especially on the first day of unlockdown, and give your time consistently since last 4 days. For formal vote of thanks,
I would like to invite my colleague Praveen Mehra ji to give it, and then we will close the session today. Yes, Praveen ji, please come. थैंक यू गुरु जी। मंच पर आसीन आज के सभी वक्ताओं का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। श्री सीए शिंदे जी, श्री डॉक्टर अरुण जोशी जी जो अभी शायद नहीं हैं, डॉक्टर एसके गुप्ता जी, आचार्य प्रेम भाटिया जी एवं श्री उपेंद्र पांडे जी। डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप की ओर से तथा हमारे सहयोगी संगठन CRDG फाउंडेशन, ऑपिलेंस ग्रुप्स एवं रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब ने इस प्रोजेक्ट युग परिवर्तन ग्लोबल समिट 2021 के शुभ अवसर पर आपने हम सबको अपने उन्नत विचारों से तथा स्वर्णिम युग के लाने में जो आपकी भूमिका होगी और सहयोग होगा उसके बारे में आपने अवगत कराया। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब अपने हुनर से एवं अपने संगठनों द्वारा मानव सेवा में लीन हैं। हम आशा करते हैं ऐसे ही मानवता आपके प्रयासों से लाभान्वित होती रहेगी। हम आप सबको मिलकर काम करने का आमंत्रण देते हैं। आज से पहले हमें कृतार्थ करने वाले सभी महानुभावों को भी हम नमन करते हैं। इस महान ज्ञान यज्ञ को आयोजित करने में जिन साथियों ने योगदान दिया है उन सबको भी कोटि कोटि धन्यवाद। अंततो गत्वा अपना मूल्यवान समय हमारे साथ हमारे इस युग परिवर्तन के प्रोजेक्ट ग्लोबल समिट 2021 कार्यक्रम में बिताने के लिए तथा हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपने रचनात्मक प्रोत्साहन परी अभिव्यक्तियों के लिए आपका दिल से अभिनंदन करते हैं सभी श्रोताओं का। आशा करते हैं कि हमारे प्रयास अब हमारे साझे प्रयास बन जाएंगे और मिलकर हम सब स्वर्णिम युग की ओर कदम बढ़ाएंगे। और हम अपने प्रिय गुरु जी श्री हितेश चंदेल जी का भी आभार शब्दों में तो व्यक्त कर नहीं सकते, परंतु एक क्षण के लिए आंखें बंद कर अपने मन एवं हृदय के अंदर हाथ जोड़ नमन अवश्य कर सकते हैं। कोटि कोटि नमन गुरु जी, आपके अथक प्रयासों के आगे हम नतमस्तक हैं। Thank you all for being with us. We have another day tomorrow, so thank you so much. Just 1 minute. Thank you very much, Praveen sir. The way your passion, the way you are also involved voluntarily with your every part of your soul, and the way you are presenting this. Thank you very much. Thank you very much. You inspired the entire PYP group. Thank you. God bless all. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरी कोलीग गरिमा वर्मा जी, आप सुन रहे हैं? गरिमा जी? जी सर, नमस्कार, थैंक यू। Yes. Very quickly, please announce the speakers of tomorrow's session. Gee, sorry for the video. I'll quickly announce the speakers for tomorrow. First of all, thank you to all the dignitaries who have come today and blessed with your presence this auspicious day of day 4 of Project YugParivartan Global Summit 2021. It was great listening to all of your insights and बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सभी श्रोताओं के लिए, सभी के लिए एक अनाउंसमेंट अबाउट द स्पीकर्स फॉर टुमारो। क्या हमारा लाइनअप रहेगा मैं क्विकली कर देती हूँ। कल 4 एमिनेंट स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जी वेंकटेश राव जी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। देन वी हैव श्री सत्य प्रकाश भारत जी जो कि सोशल अवेकनर हैं और एक प्रभावशाली एजुकेशनिस्ट भी हैं। Then we have Mr. Surendra Pathak, जो कि consultant BR Ambedkar University and ex-HOD, Head of Department, IASA University of Rajasthan हैं। और फिर जुड़ेंगे हमारे साथ अचिंत्य कुमार घोष जी जो कि Executive Director of NGO काबिल और ex-CEO of NGO प्रदान हैं। So please आप सभी दोबारा आइए, कल 11 बजे हमारे साथ जुड़िए and we'll have another awesome, very fruitful and very profound discussions, lessons from our eminent speakers. Thank you very much, Hitesh sir, for giving opportunity to all of us to be here today in this virtual platform. Dhanyavad. Thank you. Thanks everyone, and with a big round of applause for everyone, speakers, panelists, and the Project YugParivartan team, we are closing the 4th day of this 5+1 day summit. Bye for now. Please leave the chat box open for some time. जाने के पूर्व जिन साथियों ने अपना संपर्क सूत्र नहीं दिखाया कृपया लिख देंगे। धन्यवाद। CMSC प्लीज लीव। 10 मिनट के लिए मीटिंग ओपन रखी जा रही है। आप अपना अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ते जाएं और हमें सिनर्जी क्रिएट करने का मौका देते जाएं। धन्यवाद। थैंक यू CM जी, प्लीज एक अच्छा सा सोलफुल जिन्होंने पूर्व दिनों में जिन साथियों ने those who have not been able to leave their contact details in last 4 days, they can do it now.
including today. यदि आपने पहले छोड़ी है तो you may relax, but then rest please leave your contact.